Hello, hello, hello. Namaskar, adab, sat shri akal. A very warm welcome, everyone. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था ऑन माय फ्राइडे नाइट और आपकी सैटरडे नाइट को मैं लाइव आऊँगा. बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस, बहुत सारी बातें जो आज हम डायरेक्ट दिल से, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी इनहिबिशंस, विदाउट एनी डाउट्स, आई एम गोना एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस. आई विल आल्सो टेक यू ऑनलाइन. हालांकि मुझे इस शो को और इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट लुक्स लाइक बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डाउट्स हैं, एंड द बेस्ट थिंग टू क्लैरिफाई एंड मूव ऑन is to talk to you right face to face, one to one. So, definitely I will take up all your questions, all your concerns. पहले कुछ मिनट definitely मैं बात करूंगा, जहां पर I will clarify the biggest question, जैसे कि आप अपने वीडियो के लाइव पे भी देख चुके होंगे, टाइटल में भी वेयर इज विभोर, वहां से जरूर शुरू करेंगे, क्योंकि a lot of you have been kind of asking me questions, putting a lot of confusion around the relationship, around कि क्या हुआ विभोर के साथ and all that stuff, why are we not doing lives again. तो सारे questions हम आंसर करेंगे, बट मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी शुरुआत से ही कि let's maintain some kind of dignity, and let's maintain some kind of respect for everyone. I know there are people who love me and Vibhor. There are people who don't love me and don't love Vibhor. But at the same time, let's not make it about Vibhor or Varun only. ये एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इमोशनल मूवमेंट थी. We all got connected because of something. हम वो एसेंस ना भूल जाएं, वो फीलिंग ना भूल जाए. इस वजह से मुझे ये सेशन करना पड़ रहा है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत से ऊपर और कुछ नहीं है, और कभी होगा भी नहीं, because that is what brought us all together, and that is what connected all these hearts, all these people, जिन लोगों ने हमें इतना प्यार भी दिया, जिनको इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी मिली और आगे भी मिलती रहेगी. सो देयर इज नथिंग दैट इज गोना स्टॉप अस. बट मैं सिर्फ उतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज hear me out. We will have some of our team members also join maybe in some time, who will answer some questions, and in the end I think we'll try and see if we can also get Vibhor. We'll let you know, and as to how, because he also does some lives. तो आप सबको एक बार yes, a very good morning. बहुत सारे लोग पहले बहुत प्यार दे रहे थे और मजाक भी कर रहे थे कि वरुण यूएस में रहते हुए भी इंडिया टाइम फॉलो करता है. इसी से आपको समझ जाना चाहिए, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट. आपने खुद ही ये स्टेटमेंट की है कि यहाँ रहते हुए भी, टाइम डिफरेंस होते हुए भी, कभी ये फर्क नहीं देखा मैंने, और ना मैंने किया, और ना मैं करूंगा आगे भी, बिकॉज द इमोशंस अटैच्ड टू सुशांत सिंह राजपूत, दे टेक प्रेसिडेंस. चाहे आज विभोर है, चाहे कल कोई अर्जुन होगा, चाहे अमित होगा, चाहे अंजलि होगी, नाम बदलते रहेंगे, वरुण होगा. Names will change, definitely names will change, but हमारी ये फाइट चाहे आज सुशांत के लिए है, कल को जिताब के लिए होगी, किसी के लिए भी होगी, we will continue this fight. So आप सबको, जितने भी आप लोग हैं, I know your emotions, your feelings, your love, your affection for Vibhor is on a high, but let's also try to understand, okay, it's not about विभोर और वरुण. इट इज ऑल अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म को एक स्ट्रक्चर दिया, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर सुशांत सिंह. आई टेल यू कुछ चीजें जो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ. आई थिंक जितना जोरों शोरों से आप सब सुशांत सिंह राजपूत केस को फॉलो कर रहे हैं, उतने ही जोश से हम एक एक वॉरियर जो यहाँ बैठा है यूएस में, और हमारी पूरी टीम में जो अक्रॉस द वर्ल्ड बैठे हैं, सब उतने ही जोश से कर रहे हैं. सो प्लीज, वन थिंग व्हिच आई रियली वांट टू क्लैरिफाई इज इट्स अबाउट सुशांत सिंह राजपूत. It's about the justice for Sushant Singh. Now, let's get to the main question, the question which you all have been asking. Where is Vibhor? Why are we not doing these lives anymore? So let me take you back couple of weeks. जब हमने ये शुरू किया था, वी स्टार्टेड ऑफ ऑड टाइम्स पे करते थे, बड़े डिफरेंट टाइम्स पे करते थे, और ऐसे करते थे कि इट वाज कपल ऑफ टाइम्स वो 4-4 5-5 घंटे के सेशन किए. सो विभोर इज वन पर्सन जो
I think, who took that initiative India say. And there was somebody here in US, and I'll be happy to take those names as well, क्योंकि everybody knows कि ऐसे ही शुरू हुआ था। और आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपने भी देखा था कि लवली जिन्होंने यहाँ यूएस में बिलबोर्ड बनाया था, she was the one who connected me with Vibhor. I had no clue who had no clue who Vibhor Anand was. So when she connected me, unfortunately, the way it was supposed to run was कि पहले दिन we were supposed to go live, and I did not have power, I did not have internet, so we could not connect. And Vibhor ne, I think ये बताया भी था, he mentioned it very clearly. He got a little pissed off too कि किसी ने इंटरव्यू लेना था और ऐसा कौन है ये कि जो टाइम देके आया नहीं. But I was left with no option, but we could not do it. And then the next time he gave me a time, we all three of us got together, and somehow we connected very well. Yeah, आप सब जानते हैं. I'm not kind of hiding it, and it's not something that I'm making it. So when we connected, when we started off this conversation, we really thought, we had the same mission. We still feel we have the same mission. But I think there were certain things that he were doing based on his his style, his backup, his जो information जहां से भी उनके sources थे, and all that stuff which was known best to him. I was just a moderator. मैं एक moderator था जहां मैं I was not even asking very tough questions. I was trying to just facilitate. I was trying to get the information for myself. और आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि most of the times, I would say 99% of the times, जब भी वो कुछ रिवील करते थे, even I was shocked. I was also taken aback. So कई लोग समझते हैं कि मुझे पहले से पता होता था. और and again, I'm saying this on live because Vibhor Anand himself mentioned it. कि Vibhor कुछ भी नहीं मेरे को बताता था. I didn't have. और the funny thing, मुझे भी वहीं से पता चलता था जहां से आपको पता चलता था. मैं उसको ट्विटर से देखता था. ट्विटर से पता लगता था कि क्या होगा एजेंडा आज की कन्वर्सेशन का. सो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑफ. स्लोली स्टेडली, यस, आप सबने बहुत ज्यादा उसको उस एक बॉन्ड को हमारे बहुत सॉलिडिफाई किया. एंड आई रिस्पेक्ट दिस गाय, आई रिस्पेक्ट विभोर आनंद अ लॉट. There have been people who've been throwing pot shots, who've been throwing a lot of stuff on him, on me. पर मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि आज की डेट में जब भी मैं बात करता था, विभोर was a guest. He was someone who came on the Varun Kapur show. Of course, it was not such a big platform. No, मतलब I cannot even defy that. कि अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मेरे को इतने hundreds and thousands of people देखते थे, नहीं देखते थे, इतने नहीं होता था, because I used to have a very sweet छोटा सा एक program जो मैं run करता था. But now, with all of the support from Vibhor, this platform became big, and I give him all the credit for that. तो आप लोग ये जो कह रहे हैं ना कि विभोर और वरुण के बीच में कोई इशू है, let me just clear that question. Let me just answer that question right away. There is no, वो कहते हैं ना, एक मूवी का किसी ने डायलॉग मारा था कि he is, हमारे बीच में कोई दरार पड़ने का सवाल नहीं पैदा होता. Because again, let me just clarify, any guest who comes to my show, and this is not a radio station that I own. ये रेडियो मिर्ची 1310 मेरा रेडियो स्टेशन नहीं है. मैं एक प्रो बोनो की तरह इसको काम करता हूं, बिकॉज आई हैव अ पैशन. आपने देखा ही होगा और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं. तो यही रीजन था जिस वजह से मैं ये रेडियो शो शुरू किया था. एंड इट्स बीन क्लोज टू 3 years. So I've interviewed thousands and thousands of people in the last 3 years, and Vibhor Anand also is one of them. तो आप लोग ये समझते हैं कि अगर मैं उसके साथ कोई मेरा एफिलिएशन है या मैं उसके साथ मैंने कोई काम किया है. Guys, I know him for the last 16 days, just 16 days, जिसमें से हमने 13 दिन continuously back to back shows किए हैं. Actually, yeah, 13 कह दूंगा और आज 17 day है. So this is my association with Vibhor Anand. Now वो क्या करता है, नहीं करता है, विभोर आनंद काम करता है, उसकी क्या डिटेल्स, क्या फैमिली है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आधी से ज्यादा चीजें जो मुझे पता चली हैं अबाउट विभोर आनंद हैव बीन ऑन द शो. एंड एंड यहीं आके मुझे उसके बारे में
पर्सनली भी थोड़ी चीजें जैसे पता लगी है कि द होल रीजन व्हाई ही इज डूइंग इट इज टू रीजंस. वन, जो उसका मोटिव है कि द क्लीन अप व्हिच ही इज बीन गिवन अ डायरेक्शन और नॉट, वो उसको विभोर वुड नो बेटर. द सेकंड वाज द पर्सन हु ही लव्स, who is maybe not in his life. ये शायद उन्होंने शो पे भी बोला था. उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह दिया कि what, go clean up, go clean this gutter up. जो गंदगी मची हुई है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में, उसको साफ. And I think he's very clearly said in one of the sessions where he said, मैं सिर्फ उसके चक्कर में मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ. For a channel, whether he's a, how would any person who is like a moderator know? मैं अब उसके अंदर तो नहीं जाके देख सकता, मैं तो उसके अंदर जाके झांक नहीं सकता कि what is his motive. मुझे वही दिखेगा जो आपको दिखेगा, जो आपको दिख रहा था. He was talking about certain things. अब उसके पास फैक्ट्स थे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अगेन मैंने इसका भी बड़ी बार आंसर दिया और मैं आज फिर वही क्लैरिफाई करता हूं. एंड बल्कि इसको तो मैं एक क्वेश्चन की तरह आप सबके सामने भी रखना चाहता हूं. आप लोग टीवी चैनल के सामने बैठते हैं, आप न्यूज को देखने हैं, आप डू यू गाइस गो एंड चैलेंज द पर्सन कि इसका क्या प्रूफ है? जो आपको न्यूज में दिखाते हैं, वट एवर दे टेल यू, दे विल जस्ट टेल यू ऑन द न्यूज. इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, राइट? आप लोग वहां जाके न्यूज चैनल को क्या आप ईमेल करते हैं? क्या आप उनको फोन करते हैं? क्या आप उनसे चेक करते हैं कि what is the proof for you? Same thing मैं विभोर के साथ करता हूँ. विभोर was a guest who is sitting on the other side of the laptop. अपने घर से यहां से भी वो कर रहे हैं. And he claimed certain things. कई बार मुझे होता था, I'll be very honest, कि यार are you serious? ये सच है? ये इतना नाम लगा रहे हो? ट्विटर पे आप देखें, he's named so many people and he's tagged them. तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मेरे क्वेश्चंस हैं, जो आपकी डाउट्स हैं वो मेरी डाउट्स हैं. मुझे अपने से आप अलग करके अगर ये कहें कि I am a partner in his crime or whatever he does, that is really not justified, is what I want to just explain. कि विभोर आनंद या विभोर को भी छोड़ देते हैं, राइट? इस टाइम पे अगर मैं किसी को अपने ये मैसेजेस में देख रहा हूँ, लेट मी जस्ट पिक एनी नेम, राइट? Let's say who is Shasta Inayat. I'm sorry, I'm picking up a name, like Shasta, let me just say, or Will Tell Truth, right? Will Tell Truth, जो भी हैं. I don't know who you are, but you are writing something to me on a public platform. You could be writing something good, you're writing something bad. Can I come and question you, or have you come to my house, come to me and asked me कि वरुण तुम्हें मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ है? नहीं, आप जो भी लिख रहे हैं आप लिखें, वो that is your opinion. विभोर जो बोल रहा है that is his opinion. So I just want to clarify this thing once and for all कि अभी हमारे गेस्ट विभोर थे, कल को हमारे गेस्ट कोई और होंगे. Are you guys expecting me कि मैं हर एक प्रूफ किसी से पहले अपने फिजिकली हाथ में लूं and then I let them speak on this platform? Is that even practically possible? Is what I'm saying. So कल को मैं किसी और के साथ इंटरव्यू कर रहा हूं and that person might have some very very critical evidence in their hand. मैं कहता हूं विभोर का एग्जांपल लेते हैं. विभोर के पास बहुत क्रिटिकल एविडेंस है. Do you think Vibhor will give that to giving को भी देख के लाइफ को रिस्क में डालना आपको नहीं लगता कि वो लाइफ को रिस्क में डालने वाली बात होगी? एंड सिर्फ मेरी क्यों बात करें, we now have a team. I have people who are doing so much stuff in the back end. They are taking care of so much stuff. They are really, now it is just not about the Varun Kapur show. We've started a platform. वहां पर हमें obviously responsibility है थोड़ी चीजों की, लोगों की responsibility है. We have to vet out few things. But do you practically think कि कोई भी guest जो प्लेटफॉर्म पे आता है, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल, न्यूज चैनल पे इतनी डिबेट्स होती हैं, देयर आर पीपल हु आर सेइंग टू एंड फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, राइट? तो अगर दोनों को सामने बिठाया जाता है, डज मे बी एन अर्नब गोस्वामी, डज मे बी द रिपोर्टर्स फ्रॉम टाइम्स नाउ एंड अदर स्टेशंस, क्या उनके वो लाइसेंस या पासपोर्ट या आईडीज लेके उनको वैलिडेट करके बैकग्राउंड चेक करके बिठाते हैं? व्हाट आई मीन, आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट. और मैं लोगों को लूंगा, मैं आई वांट टू पुट दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एज वेल, दैट इज दैट हाउ यू थिंक एनी प्लेटफॉर्म शुड बी? कि हम बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट ना करें. ऑफ कोर्स यू कैन ट्रस्ट विभोर, दैट्स अप टू यू. I want to trust him, that's my personal thing. This platform
is not personal, guys, is what I'm trying to explain. This is not personal. This is not about me. This is not about, I have a responsibility for the station. आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये रेडियो मिर्ची का एक लोगो लगा है. ये लोगो एक लोगो लगाने के लिए नहीं है. दिस मीन्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद पुटिंग दिस अप. यू नो, ऑफ कोर्स आरजे वरुण हो गया, वरुण कपूर शो हो गया, दैट्स माय प्लेटफॉर्म, दैट्स माय you know, क्या कहें, identity. That's my identity. But what about this Radio Mirchi? Am I not accountable to them? Am I not a responsible person to them? Now if somebody gets into trouble, and again, you know, one of the reasons जो लोग पूछ रहे हैं कि why are you not doing, आपने विभोर का ट्वीट देखा होगा. You must have seen that. It has been a very candid conversation with, he has been here, he has been, you know, उस एक पर्टिकुलर शो के बारे में भी अभी हम एड्रेस करेंगे आपके क्वेश्चंस. वी विल डेफिनेटली एड्रेस योर क्वेश्चन, सो प्लीज keep on asking those questions. I will take them up. But इस टाइम पे what I really want to focus is, we've talked about it. I have told him certain things which really put certain people, including myself, at risk. That was the whole point why we had to take certain decisions, you know, to be very honest. आप खुद समझ लें, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप अराउंड द वर्ल्ड बैठे हैं, स्पेशली वो लोग जो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं. मैं एक एक करके, यू नो, आई एम गोना टॉक अबाउट 2 सिनारियोज. एक सिनारियो है जो इंडिया में ही बैठे हैं इस टाइम पे, क्योंकि दिस केस इज ऑल अबाउट इंडिया. यू नो, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन स्टार, इंडियन, यू नो, माफिया, जिनको मैं माफिया भी कहता हूँ, गटर कहता हूँ जिनको मैं, वो लोग भी इंडिया में बैठे हैं, यू नो. तो वो एक कॉन्सेप्ट है. दूसरा है कि जो इंडिया में ही बैठे हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सबके लिए जस्ट इमेजिन, आप अपने घर में बैठे हुए अपने प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आप ये बातें करते हैं, ये नाम रिवील करते हैं. विल यू नॉट फियर फॉर योर लाइफ? विल यू नॉट फियर फॉर योर टीम्स लाइफ? अगर आपकी कोई टीम है और आप ये शो करते हैं, मुझे सिंपल एक लॉजिक, एक रीजन ही दे दें जो जो मुझे भी अभी, यू नो, एक क्वेश्चन है. And I think I will ask Vibhor this question for sure. There are about what? कितने मिलियन लोग हैं इंडिया में? 130 मिलियन या जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन है. Why is no one in India इतना, इसको मैं क्या वर्ड यूज करूं, गट्स कहूं या प्रोएक्टिव कहूं, या जो भी उनके लिए वर्ड यूज करे, इतने लोगों में से कोई भी कोई सोशल मीडिया एंड डिफरेंट यूट्यूब हैंडल कि तुमने सिर्फ ये शो शुरू किया क्योंकि तुम्हें व्यूज चाहिए थे, तुम्हें सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, तुम्हें ये. लेट मी जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन. एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने आए हैं, यू नो, आज आया हूं मैं. एंड पार्डन मी अगर कभी थोड़ा सा लगे कि मैं थोड़ा अग्रेसिव होता हूं या मैं थोड़ा, बिकॉज एंड ऑफ द डे, यू नो, आई रियली नीड टू क्लैरिफाई फॉर द ओनली रीजन दैट मेरी क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक. यू नो, मेरे स्टेशन जिसके लिए मैं करता हूं उसकी क्रेडिबिलिटी है एट स्टेक. I have a responsibility for a team of few members जिनके लिए मैं ये बोलने आया हूँ. You know, अगर सिर्फ मेरी बात होती या सिर्फ मेरी individual identity के ऊपर होता, you guys could have thrown all the pot shots they could have taken. I would have not bothered. But there are people other than me who are part of this, and we are doing certain things. So I don't want to start off on a wrong note. So that is the reason I'm answering. So going back, इतने सारे लोग हैं इंडिया में. Why is somebody not ready to work with Vibhor to just give the platform or create a platform or just sit with him and do it? I think मेरे को जो समझ आया, जब मेरे को रीजनिंग लगी, वो सिर्फ ये लगी कि obviously they are also, you know, very protective. They don't want to take a risk because they know the people involved can do certain things which might not be good for them, for their family or overall. Now, so अगर इंडिया में रहते हुए आप लोग ये सोच सकते हैं और ये कर सकते हैं कि, you know, you don't want to get into all this. Tell me about someone who is in US या किसी और कंट्री में बैठा है जहां पर वो अपनी एक मेहनत कह ले या हार्डवर्क कह ले करने आया है, and we are trying to build up, you know, something for our future, and all of a sudden something like this happens जहां पर international mafia, drugs and all the stuff. Don't you think I am putting everybody at risk कि इनमें से कोई भी आया तो
they can definitely, jeopardize the whole future, career, and even lives of so many people. So थोड़ा सा लॉजिकल सबको सोचना चाहिए बिफोर टेकिंग पॉट शॉट्स के सोशल मीडिया स्टारडम ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बार मैंने देखा है, आई हैव बीन ऑन सच स्टेजेस विद सर्टेन आर्टिस्ट. एक आर्टिस्ट एक दिन कहीं होता है, अगले दिन वो कहाँ चला जाता है कोई पता नहीं होता. आरजे की एक बड़ी मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड आई डोंट इवन कंसिडर माई सेल्फ एज अ जर्नलिस्ट. लोग मुझे जर्नलिस्ट भी अब तो कई बार बुलाने लग जाते हैं. एंड आई टोल्ड गाइस, I'm a journalist. I am a very simple guy who has a family, who has a career, who has a future. This is something which I have done only and only for passion. I will continue to do it. मेरे चाहे 10,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे मेरे 10 हो, I did it for my community. I'll keep it for the community, and that's why I will continue to do certain things in a separate manner. जहां तक रहा विभोर आनंद का बात, what he is doing is up to him. That's his decision. वो नाम लेना चाहते हैं लोगों के, please नाम लें. And I think everybody deserves to know who the culprits are. So end of the day, विभोर क्या कर रहे हैं. और अगेन मैं बार बार विभोर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये सेशन लेने पे रिक्वेस्ट की, मजबूर किया, और बहुत सारे क्वेश्चंस, कमेंट्स, ईमेल्स, फोन कॉल्स. आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइज. आई नो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में, मैं भी हूं. मुझसे ज्यादा आई थिंक यहाँ पर और कोई नहीं होगा. एंड I feel fortunate enough, मैंने ये पहले भी आप सबको बताया है. द मोमेंट मैंने वो पढ़ा सुशांत सिंह राजपूत का नोट जहां पर लिखा था कि आई वांट टू मीट माय फ्रेंड वरुण एंड पार्टी विद हिम इन वेगस वेरी हार्ड. I felt a very spiritual connection with Sushant, and that kind of motivated me even more. ये मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को फोन कॉल पे. And that motivation will continue no matter what happens. आप लोग unsubscribe करते हैं, आप लोग dislike करते हैं, आप लोग comments गंदे भेजते हैं, it will not demotivate me. Let me be very honest, क्योंकि I am not here for fame, I am not here for anything. मेरी अपने लिए responsibility है, family के लिए responsibility है, and more than that now I have a responsibility for the team that has been formed, and even bigger for the social causes, for the different causes that we are taking up. So उसके लिए हमने एक छोटी सी मूवमेंट शुरू की है. मैंने उसके बारे में कल बात भी की थी. वी स्टैंड फॉर जस्टिस. ये एक प्लेटफॉर्म है जो आप सबके लिए है. आपने ही बनाया है, आपने ही, ये तो मैं वर्ड भी नहीं यूज कर सकता कि मजबूर किया है, बट आप लोगों ने मोटिवेट किया है हम सबको. एंड आई वुड लव माई टीम मेंबर्स जो अभी सुन रहे हैं, जो इस टाइम पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, would encourage them to please come and connect with me so that we all can address certain more questions. But now let me answer some more questions. Do I support Vibhor Anand? Vibhor ने एक ट्वीट किया था where he has asked for money. Now मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले बात की, इस क्वेश्चन को मैंने आंसर करने की कोशिश की. विभोर आनंद sitting in India, he has whatever backup he has, whatever thought process he has been taking some names. I am sure, again, I'm talking on behalf of him, but I am sure he has some solid reasoning why he wants to create that platform, And one thing which I'll tell you very honestly, उस सेशन के बाद जब उन्होंने पहली बार इसको मुझे कहा था स्क्रीन पे स्प्लैश करो कि do people want, it was I think उसने ट्विटर पे डाला था, एक ट्वीट था, and there were about more than 2,800 people who said yes. So I would like to answer or question those people who said yes. अगर आपने yes किया था, then why are you not coming up and answering those questions for me? मैंने तो नहीं वो क्वेश्चन का जवाब दिया, मैंने तो नहीं वो क्वेश्चन पूछा आपसे, वो ट्विटर पे विभोर आनंद ने पूछा कि वो बनाए नेटवर्क. अब अगर वो नेटवर्क बनाना चाहता है, वो जैसे भी फंडिंग लेना चाहता है, अगेन इट्स हिज डिसीजन. व्हाई इज अ मॉडरेटर ऑफ अ रेडियो शो बीइंग क्वेश्चनड कि डू यू सपोर्ट हिम और डू यू नॉट सपोर्ट हिम? ये क्वेश्चन ही कहां से आता है? व्हाई वुड आई बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल? इफ यू आर रेडी टू गिव हिम मनी, दैट्स बिटवीन यू एंड हिम. Did you get an account number from me? Did I give you my personal account number? Did I ask you कि please pay money? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं. It is his decision to start this network. He wants support from you guys. You on the live chat,
on Twitter, everywhere you said, yes, we will give you. Why? Why are you questioning me? Why did I become the poster boy for whatever he's doing? It's Vibhor. So please go question him. And a question मेरे से पूछा why if he has all the proofs. I think I'll डंके की चोट पे जैसे कहते हैं ना, मैं कहता हूं अगर उसके पास ये proofs हैं, I'll be the first person to literally do something to these this mafia, क्योंकि I am also as much hurt as you guys are. तो अगर तो विभोर आनंद के पास the first one to voice it. I will be the first one to have him on this platform or any other bigger platform. But again, that's a very big if. Agar proof. Now it has to be Vibhor who has to answer this question, not Varun. Varun is just a moderator, guys. Varun is just a host of a radio station who is trying to do certain things in a certain way so that information आप सब तक जाए. मैं इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं इसका ओनर नहीं हूं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो प्लीज कीप मी आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल. हाँ, मैं अगर कोई क्राउड फंडिंग शुरू करता हूं, मैं अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई आई नीड मनी टू डू सर्टेन थिंग्स, yes, I am accountable for that question. Please ask me questions that I am saying that I prove that I have a justification. If somebody, again, let me just take a little detour. I have interviewed few people in the past. What would be how would you validate that? You'll go to social media, you do a Google search, you go to a YouTube and look for that video, and you'll see, oh yeah, he's making fun, people are enjoying, maybe itne views hain. Same thing for a musician, yes, he's playing songs, he's playing an instrument. That's pretty much it, right? अब उससे ज्यादा मैं, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी कि अगर कोई आके मुझे कहता है कि जी मैं आई एम द लेट्स से विभोर कही कि आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर. Are you expecting me to go to the court या bar association, get a validation from him or her? Can you prove this is this person is an actual attorney or a lawyer? Doctor, if a doctor is there, do you want me to go to the medical board and get a certificate that he has completed his medical education? Guys, let's all be realistic, let's all be very very truthful to each other. कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ इंटरव्यू होता है, लोग आते हैं, दे विल स्पीक देयर हार्ट आउट, वी डोंट affiliate ourselves with them, we are not at all associated with. That's pretty much it. एक और क्वेश्चन जो मैं डेफिनेटली, और उसके बाद आई एम गोना ओपन इट for you to join and talk about what you feel. And I would request, अगर मेरी टीम वाले जो भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं सारे, if you guys can also please start joining, I would love to have you guys so that you can also answer questions. Now, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आपने एक और बढ़ के पूछा है is about the doctor. Let's address that question also. Guys, आप जहां पर भी हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, we all know this pandemic COVID has really, pardon my language, has really screwed up the whole country, the whole world right now. कोविड के चलते हम लोगों ने इतनी लाइफ्स we've lost, I can't even imagine. Yes, कई लोग समझते हैं कि ये एक फैड है, and all that stuff, it's just a flu, जैसे कॉमन फ्लू होता है वैसे ये होता है. Of course it is just like that, and it will continue for a while. It will have more people impacted and maybe many more deaths around the world. As a RJ and as a person who is doing a radio show, it has been my responsibility. Again, मैं लोगों को ये suggest करूंगा, this is something which I have spoken to few people here in my vicinity और हमारे circle में, और मैं अब आप सबको कहूंगा, please go ahead, go to my Facebook page and search for all the videos, all the Facebook lives, all the sessions that I've done around COVID. हमने ऐसे session भी किए हैं where we have thanked
द फ्रंटलाइन वॉरियर्स. सो ये कोई अलग चीज नहीं मैंने की थी कि एक डॉक्टर को अपने शो पे लाया था. दिस वाज नॉट अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी जो मुझे कहा जा रहा है कि दिस वाज अ स्ट्रैटेजी. ये एक सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए था, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं इस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के एक टॉपिक पर. बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एक नॉर्मल लाइफ भी है उसके अलावा जो हम सबकी लाइफ चल रही है. उस लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोविड, जो हम सब फेस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं. आई हैव बीन इन दिस लॉकडाउन सिंस एंड ऑफ फेब्रुवरी. मार्च से यूएस के अंदर, स्पेशली हमारे कैलिफोर्निया में, मेरा ऑफिस, माय वाइफ्स ऑफिस हैव ऑल बीन लॉक्ड डाउन. हमें ऑफिस नहीं जाना होता, हमें घर से काम करना है. हमारे बच्चों के स्कूल्स बंद हैं. हम लोग कहीं बाहर बाल काटने तक नहीं जाते, हम घर पे अपने आप सब कुछ कर रहे हैं. It is so bad that it becomes a moral responsibility for any RJ or anybody who is using a platform to talk about this. So me getting a doctor and you guys taking a pot shot कि मैंने उसको, मैं लाया या वो डॉक्टर जानबूझ के आया, that's not the case. So one thing which you have to also understand, इस प्रॉब्लम के बारे में हमने बहुत बार बात करी है, आगे भी मैं करूंगा. इट इज नॉट अबाउट यू, मी, एनीबडी, इट्स अबाउट द कम्युनिटी. ये रेडियो स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म, ये कम्युनिटी के लिए ही है, कम्युनिटी के ने ही बनाया है, और हम उसके कॉजेस को उठाएंगे. Yes, I am a very big Sushant Singh warrior. I am a very big supporter. I have done some things which I never thought I will. बट एट द सेम टाइम अगर आप मुझे ये कहें कि मेरे शो पे कोई और ऐसा ऐसा आएगा नहीं जो जो किसी और टॉपिक के बारे में बात करेगा, तो वो नहीं होने वाला. वो आई विल इनवाइट गेस्ट, आई विल इनवाइट सर्टेन स्पेशल पीपल हु विल टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स. सो ये आप अगर टॉपिक कहें कि मुझे डॉक्टर को नहीं लाना चाहिए था, दैट विल नॉट हैपन. इट डॉक्टर क्या, और भी फायर फाइटर्स हैं यहाँ हमारे कैलिफोर्निया में, ऑरेगन में. There's a lot of fire going on, and उसके बारे में हम बात करने जरूर चाहेंगे, because a lot of people have been impacted. So the doctor coming in and putting some questions, you also have to understand, Vibhor is someone who is stating certain things, certain facts which are best known to him. Doctor comes in from his focus area and he is answering them from his perspective, from his knowledge. His knowledge is what he's gained in school or colleges and all that stuff. अगर उन दोनों के ओपिनियन नहीं मिलते, then it has nothing to do with the station. Again try to understand, डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोला था कि you know what, मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे आप डेटा दे दे, मुझे आप बेसिकली रिसर्च का दिखा दे. So that was the only thing जो डॉक्टर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ. And the other topic is, जो एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, the एड्रीनो जो उन्होंने बात छेड़ी थी, there is about that, and again Vibhor ne, I am sure he has facts, that's why he brought that up. I am sure he has some kind of backing, that's why he took certain names. But by taking certain names, he also put a lot of others at risk, is what I also want to try to tell you. Of course he might have all the proofs with his hand, with him. But at the same time, I, as an immigrant worker in this country, cannot, without getting that proof, पहली बात तो without getting that proof, I cannot even validate that. So पहला fact तो ये मैं आपको clear कर दूं. दूसरी बात, I am not that stupid, guys, कि मैं कोई ऐसा proof अपने हाथ में लूंगा, because the moment you get a proof, you become as equally liable as anybody else. So I think आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी ऐसी चीज को इतना डिटेल में नहीं घुसते, unless you maybe are protected by the law, or you're protected by someone. And right now, as it stands, I have to take care of the protection, of security of my family and the team, so I could not jeopardize that. The last question which you guys are asking, will you have Vibhor? Very clear answer. ये मैंने बड़ी बार अभी इस लास्ट आई थिंक 30 मिनट्स में जो मैंने बात की है, मैंने उसमें बड़ी बार ये आपको समझाया. दिस इज अ प्लेटफॉर्म, गाइस. चाहे वो विभोर हो, चाहे वो अजिताभ की फैमिली हो, चाहे वो कोई और हो जो इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता है. Yes, if you have a voice,
if you are not taking certain specific names, and if you don't have proof, या आप बात भी करना चाहते हैं और आप you're ensuring the safety and security of everyone who's associated with this, you are more than welcome. So but the short answer is, अगर विभोर आनंद इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं दोबारा, कभी भी आते हैं, then it has to be only and only when we are 100% sure as a team that we are all safe. I hope you all understand that it is all about safety, it's all about security. विभोर आनंद कैसे सेफ हैं, कैसे उनकी एक सिचुएशन है जो उनको बेस्ट पता है. हम यहाँ रह के एक डिफरेंट कंट्री में, और हमारी टीम इज ग्लोबली लोकेटेड. So how can I validate, how can I ensure that everybody is safe? So end of the story, this platform is for everyone. Anybody can come here. You just have to make sure what you say, you don't make anybody like a partner in that. That's the very clear thing. Now the last thing which I, of course, kuch maine pointers jaise likhe the, I really want to make sure I cover those as well before I invite you guys. The last thing is, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला रेडियो मिर्ची 1310. This is a brand, this is a company, that is a radio station जो बे एरिया में है. They will definitely have certain inhibitions, and I respect that, because they are not just accountable to one Vibhor Anand or a Varun Kapur or the Varun Kapur show only. It's a 18/7 radio station. 18 आवर्स लाइव रेडियो स्टेशन है यहाँ पर. बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं. बहुत सारे और शोज हैं, मेरे से भी बढ़िया शोज होंगे, बट एट द सेम टाइम वी रियली हैव टू रिस्पेक्ट देयर सेफ्टी एंड security as well. Security की बातें I'll sweet, the most important thing. So thank you for listening to me for this 30 minutes. Now I'm going to open it up for people to come on, talk to me, and tell me what exactly did I do wrong to get some kind of bad vibes. Definitely love to hear you guys and take up your questions directly. Now before I do that, one thing which again I want to say, हमने एक ये इनिशिएटिव लिया है which is we stand for justice, जिसके प्लेटफॉर्म पे हम और लोगों को और गेस्ट को लेके आएंगे. And I really request, it's a humble request right now which I'm making to all of you, for all the haters, all the people who don't want to support, please go ahead, don't support us. We don't expect people to support in case you don't agree to what I said, and in honesty, we are not here for any social media highlight or social media, वो कहते हैं ना, stardom. हमें नहीं चाहिए. There are people who are making videos, who are continuously posting it. We all know why they do it. We are not here for that. We are going to do very open-ended, चाहे वो 2 घंटे लगे, चाहे वो 1.5 घंटा लगे, चाहे वो 4 घंटे लगे. We are going to create those videos. We are going to do that because we want people to speak up. अगर कोई आता है और उसको बोलने में टाइम लगता है, he wants to go into details, we will do that because this is a platform, a free platform for all the people. I will definitely do that. But at the same time, अगर आप लोग नहीं पसंद करते, ये सब नहीं करना चाहते, please go ahead and you could definitely unsubscribe, or you could not support us anymore. Now the second thing, उस प्लेटफॉर्म पे हम आप सबको भी इनवाइट करना चाहते हैं. We have the pages ready. Yes, there is still work in progress which will continue to happen, और आप सबकी support से ही हो सकेगा, because this is not a startup, this is not a business, this is something which a set of few highly motivated individuals are doing in addition to their full-time jobs. तो हमें बहुत सपोर्ट चाहिए आप सबका. हमने पोर्टल रजिस्टर किया है, वी आर इन्वेस्टिंग आवर ओन हार्ड अर्न मनी गाइस. तो अगर जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज करते हैं, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम वो भी नहीं करेंगे एंड अगर हम उस मनी को इन कॉजेज में नहीं डालेंगे, देन वेयर आर वी गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम? डू यू वांट अस टू डू क्राउड फंडिंग? डू यू वांट अस टू पुट कमेंट्स एंड आस्क यू फॉर मनी? इज दैट हाउ यू वांट अस टू डू इट? आप बताएं. This is your platform. You tell us, you guide us. इस टाइम पे जो भी हम थोड़ा बहुत मोनेटाइज करके, और अभी तो
it's not even been a month, so we don't even know कि कितना आएगा, कैसे आएगा. Already we spent our hard-earned money to set up certain things. All these tools, applications, portal registration. आप लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग ने भी शायद कोई वेबसाइट्स बनाई होंगी, देखी होंगी, and you know how to set that up. It's not free, but we are putting our hard-earned money, effort, time. आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, this motivation that I'm talking about. Our team sits. ये कई बार हम सेशंस खत्म करते हैं, उसके बाद there are people in India who sit till 4-5 in the morning just to strategize, just to talk about how and what we need to do. So you need to be very respectful कि ये लोग इनको क्या, I'll tell you, the first time I joined that meeting, because these guys were doing it offline. मुझे तो पता भी नहीं था कि ये लोग कर रहे हैं. तो seriously, I commend each team member. I'm very surprised कि अभी तक किसी ने join नहीं किया, because I had given them the URL. So that's pretty much what I want to say. I will get you guys on this. Let me see if my team members are gonna join. But you know what? I would love you guys to join. और हम आज बात करेंगे obviously cases के बारे में भी. There is so much happening in Mumbai, but let's do it this way. Come on in, join me, tell me where we were wrong, correct us if we were wrong, and let's work on it together. I am opening this up so that we all can sync up, we all can be on the same page. और अगर मैंने कुछ गलत बोला है या मेरे से कुछ गलती हो गई है, पहले ही I'm gonna apologize, but I'm ready to take up notes. I'm ready to take up anything that you want to say. अगर आप आके, if you wanna kind of literally, कई बार जैसे कहते हैं ना, abuse भी करना चाहते हैं, let's bring it on. I would love to have those people, especially those people who don't connect with this feeling, who really have been maybe, there might be people who might be putting some bad comments. I would encourage them to please join this session and talk to me live on live stream, and let's address them. But on the case में obviously on Sushant Singh Rajput, I am really happy कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो they're going in the right direction. All right, so I see few people. So before we talk about that, let me just take few people. And here we go. Okay. सर बहुत अच्छा लगा आपको सुन के. मैं पिछले पौने घंटे से आपको ही सुन रहा हूँ कंटिन्यूअसली. बहुत बोलता हूँ ना. नहीं अच्छा लगता है आप बोलते सर. आपके लिए हम वेट करते रहते हैं कि कब आप आओ. आपके सारे ट्वीट्स पढ़ते हैं, लिख के रखते हैं कि भैया हाँ कि आप क्या डायरेक्शन में बोल रहे हो, क्या कर रहे हो. सो थैंक यू सो मच कि आप इतना एफर्ट ले रहे हो, इतना पेन ले रहे हो. I know like lot of things are there which are very important as far as security is concerned. So I can really respect you for that, and I really appreciate, because at the end the moment is important and safety is equally important for all of us, because we all have like our families, our kids, and like our team, right? So so as far as they are fine, we are fine. We are ready to do all the things. So I just wanted to say, I don't have any question, because I can really understand, because I also understand that being a father, how I should act as a responsible person, how as a husband, how as a son. So I have to really take care of myself so that I can able to fulfill all my dreams in my life, right? And all my missions, and of course the SSR campaign also. So I think the entire India, just want to voice out the voice of India, that yes, the entire India is also understanding your point of view. So I was keenly waiting for the link to appear. So the moment you showed, I thought, let me just say thank you so much. We all understand. There is no need to further explain that. I think Vibhor also understand that security is also important. He may have some backups within his own location, but practically it is not feasible to guard somebody in United States. Like even if I have to send somebody in United States, it will take like at least 1 hour for me to send protection. Correct. So and more than that. Oh, sorry. I think somebody is not mute.
guys, जो भी आ रहे हैं, please mute yourself so that I don't hear. Okay, or you brought up a very good point as well, जो maybe I think I also missed. Also acknowledged it that I cannot put Varun and anyone else associated with this at risk. So he also acknowledges it, and you also everybody needs to know कि जो वो नाम ले रहे हैं, right? वो they are really very dangerous people, no doubt about it, right? I mean वो उनके लिए कुछ भी करना, और इस टाइम पे विभोर बहुत हाईलाइट लाइमलाइट में है, ये मैं कहूंगा. His thing is maybe he has all that protection there, but anybody guarantee, और हमारी टीम एक जगह नहीं है. We are a global team. I'll tell you, there are people in India, there are people in Europe, there are people in Australia. How will he ensure it? And he acknowledged that very clearly. So I also have to commend him for that, कि at least उसने acknowledge किया. But जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि पता नहीं विभोर और मेरा क्या कनेक्शन टूटा है, और डॉक्टर इज रिस्पॉन्स, डॉक्टर was just saying what he knew. So everybody has their opinion. So we should not kind of divide everyone. So I really appreciate your comment, and I only thing I can expect from people, you and everybody else, is कि जो हमारे बिगर मिशन जो हमने शुरू किया उसको सपोर्ट करे. We need you guys. हमें कॉर्पोरेट नहीं चाहिए, हमें बड़ा चैनल नहीं बनाना यार, हमें बहुत ग्राउंड. That's the whole goal of the team. That's pretty much it. So thank you for supporting, and thank you for joining. All right, Thank I'm you going to so take much, more and because बहुत सारे please लोग take care बैठे of हैं. yourself. Yes, sir. Thank you Yes, so much, please take care. Deepak ji. Thank you, Deepak. All right, Vinita ji, welcome back. Hi, Varun. How are you Hello. doing? Very good. So I actually came here just to have a chat with you, and because I feel where you're coming from. I totally feel where you're coming from. Let me first start with Sushant's very popular statement. Everybody wants to be understood and to understand. And I think that we as people need to look at ourselves in the mirror and see what it is that we put out. Because what we put out is what we get at the end of the day, right? That's the basis of karma. So what you guys were doing was unconventional, and it was unplanned, clearly. So whenever anybody does anything unconventional, questions always come, right? At the end of the day, what am I looking for? I'm looking for somebody who's genuine and somebody who has a clean soul. And I see that in both of you. Do I agree with everything Vibhor has to say? No, I don't. Does that mean I'll diss him? Does that mean I'll publicly humiliate him or you? No. And I think that's where people need to look at themselves before they write things like that. You guys are trying to do something. हम सब बैठे हैं अपने घर पे, तुम लोग एक्चुअली कुछ कर नहीं जा रहे हो. तो अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है ना, तो एटलीस्ट don't kick people either. Don't do anything. Just stay out of it. Come if you can support. If not, be a silent spectator. But don't bring out negativity, because whatever you bring out negativity, it'll come to you again. And also don't blindly believe anybody. So if Vibhor is saying something, don't just blindly believe him either. And that's the blind faith, the blind belief is one of the reasons why movie stars became who they are. Because people didn't try to understand who they are as people. They looked at whatever was shown and went for it, either positively or negatively. So थोड़ा ठहराव, जजमेंट करने से पहले थोड़ा ठहराव, थोड़ा अपने आप से सवाल पूछना कि ये क्या है, ये क्या क्यों हो रहा है. विभोर का भी स्ट्रैटेजी मुझे अभी तक नहीं समझ में आया. वो उसे प्लेस किया गया है क्लियरली. वो इतना स्टूपिड नहीं है कि आके सब कुछ ऐसे बोले बिना उसके बैकअप के. और अगर उसको नैरेटिव फिक्स करने के लिए प्लेस किया गया है, तो कौन है वो जिसने प्लेस किया गया है, और आपको क्यों चुना, आपके प्लेटफॉर्म को क्यों चुना वो नैरेटिव फिक्स करने के लिए. ये मेरा अभी तक मुझे नहीं ये बात समझ में आया, क्योंकि आप तो बहुत एक छोटे से पॉपुलेशन को किटर कर रहे हो, राइट. उनको नैरेटिव फिक्स करना है इंडिया का, तो मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई. लेकिन ये इतना समझ में आया कि उनका भी दिल सही, दिमाग दोनों सही जगह पर है, और आपका भी दिल और दिमाग दोनों सही जगह पर है.
तो मुझे सब कुछ समझ में आना ये जरूरी बात नहीं है, सुशांत को जस्टिस मिलना ये ज्यादा जरूरी बात है। That is the तो most important. इसलिए Yep. आई एम हियर टू सपोर्ट यू गाइस। आई डोंट Thank, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, but I get you guys in the sense of your intentions, and I think your intentions are clean. So that's why I'm your supporter. That's thank all you. I wanted to say. Thank you so much. And the points that you made, I really like to kind of comment on that as well. Okay, even I have those questions which are a mystery to me. How did I Yeah, come into this picture? How was I kind of plotted, and what is that? But I think yeah, end of the day, how I take it is it's all destiny. This was destined to yeah, happen, yeah, and Sushant is all the divine power who brought us all of us together, and we'll do it for him no matter how we do it, what path we choose, whether we are together or we are running parallel or we are doing whatever we are doing. yeah, But at the exactly. same time, the motivation behind all this should not get lost. That's my Exactly, point. exactly. And Sushant was deeply upset when bad things were written about him. Now, what are we doing? All those people on the chat list, when you write all those negative things, don't you think it's going to affect somebody else the same way? How Right. would you feel if somebody writes something like that about you? So I know. just that's my only thing to general people. Like, if you cannot write anything good, don't write anything at all. Just keep negativity out, and that's my only sort of 2 cents. Great, great. But Thank you. Thank you. you didn't do anything wrong. I don't Thank think you you so did much. anything wrong. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're All right. welcome. I'll see you very soon again. Sounds Thanks. good. Bye. Yeah. All right. Thanks. All right. Hello. Part of the team, but yes, go ahead. Hi. Yes, thank you, Varun. So, हाँ मैं totally agree कर रहा हूँ whatever has been said, and today has been more of a little outburst, so to speak, from you about whatever has happened in the past few days. It's okay. We need to calm down. हमने आज और कल actually महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा, right? And I think moving forward हमें जस्ट अ थॉट अगेन फॉर द टीम, बैठे बैठे तुम्हारी बातें सुन के एंड सबकी चैट्स में मैसेजेस देख के यूट्यूब पे देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब बट देयर इज आल्सो नेगेटिविटी, राइट? सो एक टिपिकल बैलेंस लाइफ में जरूरी है, राइट? अगर हम पॉजिटिविटी रख रहे हैं तो हमारे को नेगेटिविटी से भी जूझना आना चाहिए. there's a yin and a yang to both places, right? So thinking on those lines, keep that in mind. Don't get flustered, don't get aggravated. जो है, हमने हमारा सबका एक ही कॉज है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें सुशांत की मौत की जस्टिस दिलवानी है, right? We need to find the culprits, whether it was 1, whether it was 2, whether it was 5 or 7, right? उसके साथ अब एडिशनल टॉपिक्स जुड़ रहे हैं. बॉलीवुड माफिया आ रहा है, ड्रग माफिया आ रहा है, करप्शन आ रहा है, शिवसेना आ रही है, there is BJP, there is Congress, there is all kinds of political humbug around this one topic. कोई भी चीज जो है ना, एक एक बूंद से जुड़ के ही सागर बनता है, right? So this is a very small drop in this ocean that has come to you, that has given some kind of spiritual connection to you. एक तार जुड़ा है for you and Vibhor, right? One day you were just, like somebody said, catering to the Bay Area population. You were having a music show twice a week, thrice a week, bringing local people out, bringing out local talent in front of the media, right? Suddenly सुशांत का केस आने की वजह से एक ऐसा अर्थक्वेक सा आया वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से हम सब जो कि बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, एंजॉय करते हैं, एक एंटरटेनमेंट देखते हैं लाइफ में, राइट? वर्ल्ड वाइड बैठे हुए हैं, राइट? मैं भी यूएस में हूँ, देयर आर पीपल इन यूके, ऑस्ट्रेलिया. हम लोगों का एक टर्म यूज किया जाता है, इंडियन डायस्पोरा, राइट? फॉर पीपल लाइक अस जो कि पले बड़े इंडिया में हैं, चाहे हम पंजाब में से आए हो, बॉम्बे से आए हो, कैलकाटा से आए हो, असम से आए हो, कहीं से भी आए हो, बट हम सब ने अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी मोटिवेशन के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए एक अलग अलग पाथ चूज किया. कोई यूके गया, कोई यूएस गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया. सेम वे सुशांत और सुशांत के जैसे हजारों स्मॉल टाउन, मीडियम साइज टाउन से youngsters, they probably wanted to go to Delhi to become professionals or in politics. Some wanted to go to Bombay
to become artists, composers, music directors, singers, actors, anything. So सुशांत ने एक बड़ा अच्छा एक करियर चूज किया उसकी फैमिली में से उसने निकला. He's a very he's from a very well educated, professionally balanced family, right? Brother-in-law from IIT, another brother-in-law DIG, well educated people. He himself was a very highly intellectual person. मुझे लगता है हम सब वर्ल्ड वाइड उसके साथ एकदम यूं कनेक्ट हो रहे हैं कि we all identify ourselves to be a Sushant. Yep. Because हम लोगों ने मिडिल क्लास फैमिली से स्मॉल टाउन से उठ के आके मेहनत करके we feel ourselves, all of us worldwide, हम सब में एक सुशांत है, right? And that should be another point for us to think very carefully. Negativity भी आएगी, positivity भी आएगी. Think about the yin and yang of both things, right? So your points are valid. I think we have to move on now. Vibhor is again one chain in this whole, one link in this whole chain of connectivity. ठीक है? आज विभोर है, कल उज्जवल होगा, परसों मे बी इश्करण होगा, another day maybe Jayaprada होंगी, right? She is also voicing out. Maybe another day there'll be Ravi Kishan who might want to appear. Then Mukesh Khanna wants to appear, right? So many Bollywood actors, senior actors, are coming in support of this movement, right? Kangna आई, कंगना ने इतना अच्छा voice out किया, right? So keep that positivity flowing, keep it balanced. And I would suggest one more thing. जैसे हमने एक मंत्र का जाप किया, I think next हमें एक गायत्री मंत्र का भी जाप करवाने का करना चाहिए 1-2 दिन में. And then let us just bring out peace, harmony, positivity and focus. CBI को करने दो अपनी investigation. There is always this, again I can use a dialogue from a movie, कि अगर आप हद से कोशिश करो सब मिलके जुड़ के इकट्ठे होके, राइट, तो पूरी कयामत आपके साथ आ जाती है, राइट? And that is how we identify, right? Yes, absolutely. Right. Okay. So let's identify that, and everybody who is giving positive feedback, thank you very much. Who's giving negative feedback, also thank you very much, because it's not criticism. Take it as constructive feedback for you and your channel and the team who's come out to you, who are volunteering day and night. Like you said, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक इंडिया के टाइम पे लोग जागते हैं, काम करते हैं. People have come out with all the banners, flyers, posters, all these decals. You're talking about all kinds of hashtags. There's a lot of brain that is going behind it. So, right. Yep, no, absolutely. Thank you once again, and keep up the good work. Yes. Thank you, and thank you to you as well. He's also part of the integral team. Just to let you know, तो इसलिए नहीं उनको लिया, but he also happened to be in the queue. So anybody and everybody is welcome. So I will definitely take more people now. Let's take the Vibhor Tiwari. Hello, the Vibhor Tiwari ji. नमस्ते, प्रणाम सबको सर. हम अभी जॉर्जिया में यहाँ पे पढ़ाई करते हैं. जॉब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पार्ट टाइम जर्नलिज्म करते हैं. सो हम यही बोलना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो हम बोल रहे हैं सबको, टू एवरीवन, बहुत सेंटिमेंट है, सब कुछ है, बट टू एवरीवन जो इस शो को देख रहा है, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे कमेंट करना बंद कीजिए. और सर आप लोग को भी हम बोलते हैं कि जो भी मॉनिटरी लेके कोई भी कमेंट करता है उनका प्लीज़ आप इंटरटेन एकदम मत कीजिए. किसी को कोई मतलब नहीं, आप कितना कमाइए, कुछ भी कमाइए. टू रन दिस कैंपेन ये बहुत साल चलने वाला है. लोगों को मजाक लग रहा है यहाँ पे, प्लीज़ मजाक हम लोग ना करें, सीरियस हो जाएं. एक लॉयर का फीस आपको पता है कितना करोड़ों में जाता है. तो यहाँ पे यू थिंक कि एक यूट्यूब चैनल सस्टेन करना बहुत ही मजाक का बात है. नहीं, मजाक का बात नहीं है. हम 6 साल से घिस रहे हैं, फोड़ रहे हैं अपना सर, तब यूट्यूब का कैसे आज व्यू जाता है. ये ऑर्गेनिक सर्च है, तभी इतना बढ़ा है व्यू. और इस मूवमेंट को अगर आप लोग खत्म कर देना चाहते हैं तो हाँ, टॉन्ट कीजिए, जरूर कमेंट में बोलिए कि क्या हो रहा है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है. और अगर आप लोग इतने स्मार्ट होते तो आप लोग ये करते. प्लीज सॉरी सर, हम थोड़ा कड़ा बोल रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं. तो प्लीज आप सबको अगर बुरा लगता है तो आप लोग अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कीजिए, उसको रन कीजिए, मेंटेन कीजिए. एक यूट्यूब चैनल चलाना, ये जो आप देख रहे हैं ये 3 विंडो आ रहा है, सबका लाइसेंसिंग फीस लगता है, आदमी का टाइम इन्वेस्ट होता है. और प्लीज हम लोग सब चीज फ्री में चाहते हैं. हिंदी इसीलिए पूरा देश में या फिर अदर रीजनल का जो बुक होता है लैंग्वेज, पूरा इसीलिए लिटरेचर चला गया है कूड़ा कचरा में, क्योंकि हमको फ्री में बुक पढ़ने का आदत हो गया है. वही मेंटालिटी यहाँ पे भी चाहिए. कंटेंट कैसे क्रिएट होगा, मोमेंट कैसे क्रिएट होगा, फ्री में. आप यूएस में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, कहीं पे भी आप लोगों को क्रिएट करना होता है तो हर जगह लोग चैरिटी ओपन क्या क्या खोल के रखता है. हर जगह कैंपेन चलता है, मिलियंस ऑफ डॉलर फंड कलेक्ट करता है, वहां पे कोई आई नहीं होता है, कोई कुछ बोलता नहीं है. यही इंडिया का लोग
XYZ फंड जो होता है बाहर में, पता नहीं कौन सा पेंगुइन कहाँ अटलांटा में कहाँ क्या हो जाता है अंटार्कटिका में, उसके लिए मिलियंस में डोनेशन दे देगा इंडियन लोग ही, इंडिया का ही लोग। बट एक छोटा सा यूट्यूब चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है परिश्रम, इतना मेहनत ये कर रहे हैं, सब कोई काम छोड़ छाड़ के कर रहा है अपना, तो आप लोगों को उससे प्रॉब्लम। इस पे रैंट हम यही प्लीज खत्म करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस पे आप एकदम टेंशन मत लीजिए, सब कोई आपके साथ है, इस पे दोबारा आप एकदम टेंशन मत लीजिए, दोबारा एकदम सर मत बोलिएगा, हम सबके तरफ से बोल रहे हैं, जो सही में SSRN होगा वो आपको इस पे कभी नहीं टोकेगा, तो प्लीज एक इंटरटेन मत कीजिए, वो लोग दूसरे तरफ का लोग है, वो दूसरे साइड का लोग है जितना लोग टोक रहा है आपको। और दूसरा हम ये बताएंगे, ये नेक्सस है, ये आज का नहीं है, ये जिहादी नेक्सस, आप पढ़िए इसका पीछे का बैकग्राउंड, तब आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग सांप के पूंछ पे पैर रखे हैं, मुंह नहीं कुचले अभी तक, यू आर येट टू ब्रेक द स्कल ऑफ द स्नेक, ये समझिए आप बात। और इतना बड़ा स्नेक है वो, एनाकोंडा से भी बड़ा है कि खा जाएगा जो जो सामने आएगा। आप लोगों को रिस्क थ्रेट एनालिसिस नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा फंडामेंटल समझिए। और सबको हम बोलेंगे जो जो लाइव आता है, प्लीज अपने फैमिली मेंबर और इतना इजीली आके आप मत बैठ जाइए अगर आप वल्नरेबल सिचुएशन में है तो। अगर आप मुंबई के अराउंड है तो प्लीज ऐसे ही लाइव में आके मत बैठ जाइए जोश में आके, आप लोग थ्रेट पैदा कर रहे हैं। कल के डेट में कुछ हो जाएगा तो हम लोग जैसे आदमी को डर लगेगा कि क्या करे क्या नहीं करे। वरुण सर, विभोर सर, सबको टेंशन होगा कि अब क्या करे क्या नहीं करे, तो प्लीज थोड़ा दिमाग लगाइए। उधर स्ट्रेटेजी चल रहा है, 500-500 करोड़, कितना करोड़ का फंडिंग चल रहा है पूरा केस सेट करने के लिए, क्या क्या खरीदा बिक्री किया जा रहा है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बस किसी का लाइक्स व्यू बढ़ जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है। तो सर सॉरी, हम थोड़ा सा अगर ज्यादा इसको अपना समझ के बिल्कुल नहीं सर, आप ही का प्लेटफॉर्म है ये, सब आप ही का है, आप ही ने बनाया है, आप ही ने चलाना है, मैं आई जस्ट हैव टू बी अ फेस, दैट्स इट। छोटा सा मेरा प्लेटफॉर्म है द वैभव तिवारी शो का, वहां पे हम 2 महीना पहले ही बोले थे, आंख में रोना आ गया था। हम पटना से हैं, उन्हीं के टाउन से हैं, अभी हम यूएस में बैठे हैं। सुशांत वाज इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, I felt the breath of the air that Sushant felt in the school life. We was almost same batchmate, थोड़ा सीनियर जूनियर थे हम लोग, भैया टाइप का जो सीन होता है। And these people are making mockery of the movement. Either you write a blank check and send it to all the supporters and people who are working on the front, or please don't criticize and please don't comment. यहाँ पे कोई मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं बन जाएगा आप लोगों के $5 $6 पर लाख व्यूअर 10 लाख व्यू से। We are trying to maintain. So sorry सर, हम सबको फिर यही बोलना चाहेंगे, बिल्कुल डेकेड का लड़ाई है ये, डेकेड का लड़ाई। और सुशांत सिंह राजपूत बलिदानी हुआ है, क्योंकि आप देखिए जब कोई निर्दोष मरता है तब उसका मूवमेंट सबसे ज्यादा खड़ा होता है। काश हम लोग पालघर के साधु पे जग गए होते तो आज शायद हो सकता था सुशांत हमारे बीच होता, सुशांत भैया होते हमारे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, आगे और कोई सुशांत नहीं हो ये भी देखना है। सुशांत भैया के बाद से अभी कितना लाश गिर चुका है इसका किसी को नोटिस नहीं है, और भी कितना लोग जाएगा किसी को नोटिस नहीं है। शायद हम थ्रेट लगेंगे, हमको टर्मिनेट किया जाए, किसी को भी कर सकते हैं ये लोग। इस चीज को आप लोग समझिए, रिस्क कितना बड़ा है और यहाँ पे लड़ने वाला कितना छोटा है। तिनका से हम लोग पहाड़ को रोके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक और चीज जाते जाते, गवर्नमेंट अगर कोई और रहता, लिख के ले लीजिए, हम पॉलिटिकल नहीं होना चाहते और प्रेजेंट गवर्नमेंट का हम बहुत खिंचाई करते हैं, बहुत ज्यादा खिंचाई करते हैं, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर नहीं होता ना तो आप लिख के ले लीजिए, अभी जितना यूट्यूबर लोग इतना खुलेआम बोल रहा है ना, एक एक आदमी जेल में सड़ रहा होता या तो कहीं गायब हो गया रहता। And I'm sorry for my passion, I am like this. So नहीं सर, यही I really felt that connect, क्योंकि मेरा भी यही पैशन ही है जिस वजह से ये चला रहे हैं। अदरवाइज जैसे आपने कहा राइट, लोगों को आई थिंक सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है, बैक एंड कोई नहीं देखता। और कितना एफर्ट, स्वेट, मनी, और जो टाइम, सबसे बड़ी वैल्यू इस दुनिया में इस टाइम पे टाइम की है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, राइट, कि कितना मुश्किल होता है। तो आई रियली रेजोनेट विद व्हाट यू सेड। आपने जो जो कहा बिल्कुल सही कहा। आई होप लोगों को समझ आ जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो नहीं करना चाहते वो आराम से, जैसे कहते हैं ना, आराम से हम जाएं, बट जो करना चाहते हैं ना वो अपनी मोटिवेशन कंटिन्यू रखे और हमें भी सपोर्ट करें, आपको भी सपोर्ट करें। आपने जैसे कहा वैभव तिवारी शो, राइट, तो आपके भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, सबके प्लेटफॉर्म पे जाएं, सबको सपोर्ट करें। आई थिंक दैट्स द होल आइडिया। सो थैंक यू वैभव भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सुन के आपको। प्रणाम, थैंक यू। नॉर्मली मैं किसी को विदाउट कैमरा लेता नहीं हूं, बट सिंस आपने एक मैसेज किया है तो आई एम टेकिंग यू। प्लीज आप अपना नाम बताएं और प्लीज व्हाट डू यू वांट टू से। Hey, hi Varun. Hello. Sorry, you can see me, right? Actually, my background is very bad, so and no, your camera is not on. Your camera is not on. You're also not able to see me.
No. It says that okay, host is able to see, but I'm so sorry. Okay, my background is very bad. No, Okay, that's I am at my native, कोई नहीं, कोई so नहीं. okay. Tell me. Yeah, because I'm overwhelmed. I don't know what to talk. Okay, Varun, first of all, yes, I'm very thankful to you because what happens is these, I mean, medium family people like us, I mean, we are so much frustrated that so many things are happening and we are not able to do anything. And what happens is with this frustration, okay, we will be bursting it out on the family member. It Yeah. happens, literally. So I mean, it's good, very good that I mean you are starting at least this show. At least you can, I mean, throw it on this show and you can express because many people of the same thoughts are connected here. Okay, and first of all, let me introduce myself. I'm an IT professional, and right now I actually I'm in coastal area and I'm working in Bangalore. Okay, I Okay. have come to my native because it's working from home. And what I want to tell is, even to people, see, Varun, it happens. Okay, Vibhor. Okay, if I want to really speak about Vibhor, we don't know. We connected through your channel to him, and we don't know whether he's right or wrong, really, because a lot of things are going on Twitter. And in fact, I sent you a mail also. Okay, because it may be true or it may be wrong. And I have some friends in Delhi. I'm just trying to collect information from him because yes, if he is genuine, Varun, as you said in many of your show, I mean sessions, if he is genuine, it's awesome, really, because we need some person like that, right? Exactly. You told We all him need. you'll be a We global, all yeah, you need people. said, Exactly. you told him that you'll be a global icon, Varun, Vibhor, if you are genuine. Yes. This is what we are looking for. So what I'm trying to tell people is because okay, why we are doubting someone, Varun? It is because we have gone through all those things again and again. Yep. Yep. We'll think that okay, something, some good moment is happening, that finally what happens? Nothing. It is, everything is cooled up. It happened, right? We have undergone all these things. Now, as someone just now said, we are able to open because of that mask, whatever we had for from last 70 years, it has been removed. Our leadership is good. Okay, that's why people are able to talk publicly. And otherwise, even if you take my case, okay, I always used to think, okay, when I was, I mean, in my childhood, the days were so good. Okay, when that comes again, somehow from last 2 years, I was getting that thought. No, it will happen. It will happen. I can go back to that time. Okay, how it was during my childhood. Okay, that is that thought we got just because of the leadership. Okay, here also, what I'm trying to say is, Varun, okay, now let me come to Vibhor again. You see, the tweeting at someone, okay, Akshay Kumar, I am giving you 48 hours time. What only my thought is, okay, see, I sent you guys a message, okay, and you could not respond. Okay, it is because it is not that you don't want to respond. Okay, you may be having other responsibilities, you may be having some high priority thing. In the same way, my only question to Vibhor was, do you expect when some 40 millions, 50 millions followers are there for Akshay Kumar, will he notice his tweet? Are you getting my point? Will he Yeah. really notice his tweet? Right. This is the Now only thought I had. we This will. is the only thought I had. Exactly. Right. Okay, I if mean, no, no, those are see, the if questions Vibhor is which, genuine, yeah, which Varun, Vibhor should if definitely Vibhor, answer. if Vibhor is genuine, I Hmm. understand. But with this gap, because thinking that the normal people will think that, oh, he has tweeted to Akshay Kumar, okay, got it. But Yep. is he really noticing that? Akshay Kumar really noticing that? He may be getting some 2, 3 lakhs every day. Is he really noticing that? Right. With Right. that, he should not take advantage of people. This is the only thing I wanted to say. Sure. No, Otherwise, thank if you. he's genuine, we are with him. We are Okay. with you. Okay, you're so Absolutely. genuine because I this is what I'm trying to say. People also, people, okay, anyone does not matter. Because if you take Sushant's case, okay, if you take Sushant's case, he actually shows the all the things. Okay, if his aspirations, his dreams, his talent, his humanity, and he showed he was surrounded by such people, which you have to learn. Are you getting it? You have to Yeah. learn from there. Absolutely. So No. And take him inspiration, yes, right? Take his absolutely. inspiration for That's the, everything. Tune your exactly. life. That's the point. And That's the don't trust point I anyone. also. Don't trust anyone just like that. Exactly. Just That's like what. that. See, the people can come as your life partner. People can come as your friend. Don't Yeah. just trust like that. Use your brain. Don't be zombies. This is what I Sure. can tell the message. Yeah. Okay, Yeah. thanks, Varun. Thanks a lot. Thank you so much. I'm Thank you. so happy. Keep it up. Same We are here. with you. Okay. Absolutely. Thank Yeah. you so much. Thank you very, very Thanks. much. Yes. All right.
Kirti. You are mute. You are now. Go ahead. So, Bole. am I audible now? Yes. All right. This is my first time on your show, but like I've been regularly keeping up with your live sessions or probably recorded videos on YouTube for so far as I remember for a long time now since this SSR's case. First of all, I must really commend your job and then as well as Vibhor Anand's job as well. I'm on the East Coast time now in Ottawa here in Canada. Like I still was very enthusiastic when I saw that live icon on your show. I thought, okay, now I have to join this show to let you know the thoughts that I've been having. Since most of the parts of the case have been discussed, like as a private individual, I've been doing my own kind of research on this case. So there are certain things that I would like to let you know. The first thing is that is just in generally speaking as well. It's about the narrative control, like that part. Some of that is already been covered. Like I wanted to tell you a couple of things on this part though. So in this age of social media, unlike like my childhood, like probably like a decade or 15 years back, we are bombarded with information from multiple sites, and every site has an agenda. Sorry, it's cutting out. So the thing I wanted to tell you is that the narrative control, this has been discussed a while back as well. In this age, like we are being bombarded with information on the social media platforms, left, right, and center. So there are multiple news. The news that you're seeing is basically not just news, but like it's a carefully crafted opinion that is being bombarded onto you. So it's kind of way of a social programming, if I would like to summarize that up. There is news, and there is fake news, and like there's a fact check as well to debunk that. Like most of the times, like say what people are doing is that if there is a new news that's coming up, and like somehow you're not programmed to think about that, you just use that fact news site, and then like you say, okay, see, this has been debunked, so it's a fake news, it doesn't hold any credence or any truth to that, and then like you get convinced yourself, and like you proceed ahead. So the depression theory, this entire part of that is basically that's how it worked. So like there has been a continuous bombardment of news that is being told that this guy is depressed, like none were looking onto the facts of the ground. So what I wanted to tell you is that most of the time people who are actually following the news should rather use their instincts first, because most of the time the instincts are right rather than the information that is being provided to you. So when you validate or invalidate or prove or disapprove some information, I kind of suggest everyone use your instincts rather than what you're being fed as a narrative. So that's kind of a very important thing. It's not just in Sushant's case, it's in an entire general a political social narrative that's being put forward in the media everywhere. It's not just limited to India, US, or any other country. It's been the same thing everywhere. So that's the first part I wanted to tell you. The second part is this is probably the kind of underrated part, but like most of them have not noticed or like probably not given much attention to. This is regarding occult or black magic. So most of them were, these things were not discussed. Now I am not here to prove or disprove its existence or its effectiveness in Sushant's case or in general or specific. But then like what I would like to say is that as someone who dabbles reading a bit of an occult on and off, I could clearly see that there are certain signs which on the Sushant's case, which basically indicate the use of the practices or the rituals of black magic or the occult that actually is being told. For example, like when like I think this kind of scenes have been shown in many movies in the past, both in India and elsewhere as well. One of the basic ritual process in black magic is you basically try to make a dummy of someone that you are intending to target, and then you kind of torture that toy, which is basically your dummy. So when like I followed kind of this the news on the media, on the social media, like it raises some very valid questions, because the boys who spoke to, I think if I recall it's Republic, they told their news reporters that the legs are broken. Sushant's legs are broken actually. So those legs are fractured, which clearly indicates that he was tortured before he was killed. And then like there are nail marks on his toes and on his feet. So that's another classic thing that you basically see in a black magic or an occult kind of ritual. The same thing with his neck. There are nail marks on his neck as well,
well, there is other paranormal activity and like there's kind of spirit communication, but like I can't validate it. But like from this, I would say that there are references that were made subtly, even in this case, probably could indicate the use of black magic. And like this is what his family has been accusing the people who are in the case of. I like to interject. This is a topic I think which I would love to talk about more in detail, not in this session, but something. So why don't you reach out to me offline? Let's see if we can talk about it, separately. Right now, I really want to understand, connect with people who have been waiting for a very long time. Okay, sure. So I just wanted to let you know this. Yeah, for sure. Yeah, I just wanted to bring out those topics that were not that have not been discussed in the past. So I just thought of bringing it up. That's all I wanted. Apart from that, we'll definitely talk about it in a separate session. We'll create a separate one, maybe a 30-45 minutes, where we'd love to understand this site, and that's what this platform is all about. Certain aspects which have not been touched upon, let's bring them up. Let's talk about it. People will believe. Some of them will. Some of will not. But if you have knowledge, if you know the facts, let's bring it up and let's talk in the next. Yeah, but I just wanted to before I close, I just wanted to let you know that I am not debating if that is if the black magic or occult kind of thing is effective, or how effective is this in Sushant's case, or nothing like that sort. What I intend to say is that I'm implying that the ritualistic thing, it has happened, and then like there are references to that even in his killing and death. Let's say if it's a professional hitman job, it would have been staged in a very different way. It's a very botched up. It's a pretty botched up because it's not done not done by a hitman. Who's supposed to stage it to make it look like a suicide. That's not done that way. Correct. So and we'll all know very soon. I think some of the narratives which already Vibhor said, some of the narratives which have been already set in the public domain. I think we will continue to talk about it, but of course, we all want justice. We all will get justice for Sushant, but we will continue this fight. Is what the goal should be. So thank you. Sure. Support. Thanks for giving me the time and opportunity. Well, I'm looking forward to talk to you again. Absolutely. Thank you again. Thank you for connecting. Good night. All right. Yes, Satish ji. Thank you again. Okay, can you mute the devices, please? Hey, Varun, can you hear me? Yes. Yeah. Hey, Varun, this is my first time here on this show, and thank you so much, Varun, for having this kind of a platform. Really much appreciated. What I wanted to bring was just about some general topics. I've been hearing you on this show right from the beginning of this particular show, that it's causing security issues and all for people who come and disclose names and stuff like that. What I wanted to tell was, Varun, you have been doing a fantastic job as an RJ, and probably this is an extension of what you're doing. Probably I thought this was the future of people like you who can extend into different domains. Basically, that's what I thought. But sad to hear that because of certain security issues, risk to life and all, probably we may have to cut short whatever you're doing. At the same time, request I like to interject. No. So don't take this that we got weak, and we're not going to stop. Nothing is going to stop. It's just that with what Vibhor was doing was putting those names. Those names, some of them are really when it comes to certain people in US, it becomes very critical. And me being an immigrant worker, I have to make sure that my legal status and my job and professional life, all that doesn't. But that doesn't mean we will still not talk about certain other issues or even this matter. But it's just that there are certain things that we have to be mindful from a security perspective. So we will keep that in mind, but at the same time talk about certain other issues similar to that, where we are not that threatened by certain people. Is what my intention was. But please go ahead. Sure. So yeah, Varun, completely understand your mindset and that as well. So hopefully you'll be continuing to bring out more topics similar to this. Probably this is one area where probably we can get in touch and understand
what's the sentiment across the world on the topics which you would bring out, basically. So just wanted to voice out my 2 cents here, basically, that you definitely are doing a good job, and I understand definitely where you're coming from and what kind of responsibility you have towards society. Brilliant. Thank you so much, Varun. Thank you. And just before you leave, at the very end of this live session, I'm going to actually kind of reveal what we are doing tomorrow. Tomorrow, when I say tomorrow for me, I don't know where you are, what part of the world you are. It could be tonight for India, and it's again something very, very big, which a lot of people have been waiting for. So I'll speak about that at the very end of the session. But once again, thank you so much, Satish ji, for the love and support, and keep that going. Sure. सतीश जी, आप इंडिया से लग रहे हैं इस टाइम पे, दिन निकल आया है और पीछे चाय वाय की खुशबुएं आ रही होंगी आपको. Okay, I don't think he can hear. I don't think he can hear. Okay, all right. Thank you so much, Satish ji. All right, Vinita ji, welcome back. You are mute. Yeah. Thank you. Vibhor, Varun, I've been wanting to come on the show, but I know that we did the SSR mantra or reading the chanting, and I couldn't get in, which is fine. We all did it for him, which is good. We have again tomorrow. We will be doing it again tomorrow, so you can join. 7:30. Yes. I'll do that. The only thing is that I may have to do it in the middle, because by the time I go to bed, it's already 10:51 in San Francisco. You know that. So by the time I go to bed, it's like 2 o'clock in the morning. And by the time I get up, it's like 8-ish. And tomorrow is Saturday. So you know what? When it's Saturday, it's tough. So I will try to join in as far as possible if I can sleep earlier, because I'm all the time watching Arnab, reading Vibhor's tweets, reading your tweets, reading everybody's tweets, including Vijay Salgaonkar's. So I really don't get sleep. But what I want to say is that please continue doing what you're doing. People are talking BS all the time, abusing you, abusing Vibhor, abusing Vijay, abusing everybody. Please don't listen to them. Just continue doing what you can. That's all I can say. Thank you so much, and thank you for supporting all the time. And I'm all there. Unfortunately, because of COVID, I can't come to your office, or I can't come to Milpitas because I don't drive. I live in San Francisco. I don't need to drive, so that's why I am stuck. We should connect offline. Text me or WhatsApp me. We should just connect offline. और जब भी खुलेगा ये, we'll get to meet. I don't even know your WhatsApp number, so I don't know how to connect. Okay. I connected with Lovely. I connected with Lovely, by the way. I connected with her. Okay. But I need to connect with you, so I need a way out. You go to my Facebook page, and it's my name, Varun Kapur. You'll find me, and through that I will connect. I'm not even on Facebook because I discontinued that account of mine because of all the Kamal. Are you on Twitter? Are you on Twitter? I'm following you on Twitter also, by the way. Perfect. So you can send me a message there, and I'll give you my number there. Perfect. See you. Good night. Thank you. And take care. Bye. Thank you. Very energetic. Thank you so much. Take care. Thanks. All right. Atul? Okay. Looks like, Atul, you're not here. Okay. All right. Please go ahead, Suraj. Hi. Yeah, can you hear me? Yes, multitasking. Fantastic. Yes, multitasking. So, Varun, I've been following you for the last 2 weeks, I would say, and it came in algorithm search, and I'm speaking from Bangalore, India. And so thanks for all the good work. It's as the person who came in early, Tiwari, I believe the name was said, it's not easy to run a YouTube channel. I did start a channel 10 years ago and nothing has happened, but anyway, because day jobs are there. So you're a facilitator. You are facilitating a discussion between two groups without giving an opinion. You're just giving a platform for people to talk. So you don't need to worry about people saying things. And you are an independent person, and your team and people around your family is there to support you. Now, coming to Sushant case, I remember 3 months ago when the news came and all, and I was like, first, okay, it is a suicide, but then my
Spider instinct say no. There's always a narrative control, and that is something I keep saying. So a little bit about my background. I'm a pharmacist with an MBA degree, work in a consulting field in healthcare, and also a science fiction author. And I've traveled more than 20 countries and worked in 7 places in India. My parents are ex-military officers, both of them, my mother and father. And my father is a 71 war veteran also, and got a national one of the medals also. Yeah. So being brought up, and I grew up in Africa, so it's a pretty much mixed up thing out here. But Sushant, when I didn't see a lot of his movies. In fact, Kai Poche, I saw a few other movies. In fact, I didn't see Dhoni also. More so because of a separate thing I did not sort of like Dhoni, but I saw it later, and I was like shocked to see the amount of realism that person bought in, Sushant bought in. And the more I started searching about his YouTube videos, his I would say that whether it quantum physics or talking about Star Trek, talking about holographic universe in terms of universe, space, and all, going in economy, like Black Swan events, or even going to philosophy. And I said, man, this guy is a reader. He's like me. मतलब कि actor भी है, topper भी है, and I'm graduate. So I said, and I wanted also to act, but being a family of doctors and all, I didn't have that. I won't say I'm middle class now, but 20 years ago, 40 years ago was middle class. So the point, and I said, this guy Sushant, why this side was not seen? And if this was, and he didn't even use PR, because if one of these big stars would have had this kind of knowledge, then it would have been totally different. They would have just showcased this thing. And I said, this is not correct. And there is a narrative point of view which I like to bring here. And that's why these 2 books I would request people to buy and read through. These are old books, Propaganda and Public Opinion, how to control the narrative, how to control the mind. In fact, Sigmund Freud, sort of nephew, spoke about Shaping and crystalline public opinion, and they called it engineering of consent. Like I'm a pharmacist. We deal with human body drug, making pharmaceutical drugs and all those areas I did. But the mind can also be engineered. So social engineering can happen, and it has happened over a period of time. And so I just want to say people to read a lot of stuff. Like I read the left, I read the right, I read the center. But form your opinion. Do not stick to one side. And coming to Vibhor, I don't want to pass any comments on him. He has his motives, he has his narrative, he has his way. Maybe he's part of a point of view, as one of the viewers just said, that how he came to your channel, who has sent him, or what has happened. So it can be a part of the bigger plan. We do not know. But I feel Sushant's soul, Sushant's Atma is bringing us in and linking us together. And that is very, very, very critical that we keep moving ahead. Do not end this, Varun. You have, there'll be pressures, and it's not easy. And I'm sure your family, within your family also, there'll be pressures. Because whenever I go into the rage, my wife or my father says that, what, क्यों कर रहे हो, काम में ध्यान दो. So है, आप भी काम कर रहे हो, हम लोग सैलरी वाले लोग हैं, इनकम टैक्स करता है. दूसरी बात है कि so वो सब factors है, and so continue doing it. If you cannot do it every day, do every 2-3 days, but bring together. And I'll be very happy to share a lot of stuff around science, around thinking around this thing, because Sushant का जो साथ हुआ ठीक नहीं हुआ. Okay, and another person who said that अगर वो साधु से टाइम में जब पालका इंसिडेंट हुआ था, हम उस समय बोलते था सुशांत जिंदा रहता. And मुझे लगा कि इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया सिस्टम कि तो हम लोग किसको कॉल करें फिर. ये तो बॉलीवुड की जो 80s की मूवी हो गई, वो हो गए, पाप को जलाकर राख कर दूंगा, विलन आ गया, ये हो जाएगा, धर्मेंद्र खुद हमें बनना पड़ेगा. मतलब I'm a freak, movie freak. I watched movies since in Nigeria. Every Friday we used to get a VHS cassette, put it in, and in the 80s just see the thing and all, and it happened. So
that's all I wanted to share. First time I've come live. I've tried before, and I've sent you a message in Twitter also. My Twitter is Clark Prasad, though my name is Suraj Prasad. Clark is my pen name as an author. And I said, so I told my wife, the more I know of Sushant, I feel I am that guy. I feel I'm seeing me only, and I feel like I could have been killed also that win. So it really hit me hard. It hit me inside. It hit everyone. It hit everyone. Yep, it hit. That's, I think I have those kind of feelings or sensations very often. Very often. Sometimes when somebody says something, the moment I got to know, right? I already mentioned. जब मुझे पता लगा he was looking for a friend, Varun. The moment I read that, of course I cried, but also I was shaking. कि यार काश मैं वही वरुण होता, काश मैं ही होता, and I could have done something. I could have saved him. I think not just me, all of us felt कि कुछ तो कर लेते, we could have saved him. But one thing which I really want to say, Suraj, we should definitely again connect offline. Since you have a lot to share, you have lots of insights and knowledge that you can share. So why not? Yeah. One thing I like to share, I don't know, am I allowed to share the screen? I've opened and kept it. If it's a phone, you can just tilt it, but you cannot share a screen here, right? Unfortunately. Okay. Anyway, there's a particular medical clinical trials websites where the medical publication for the last 100 years comes together. It's a US-based site, PubMed.com. You can just put PubMed, Google, and see. In that, when you put adrenochrome, you have from studies from 1937, so it's nothing new which has come. So the reason I actually wanted to come in, because when I heard the story, I felt, boss, ये तो पुरानी story है. So people should search on their own. Yeah, that's a very good topic that you brought up, and I think I missed that. So I will address once I have you off the stream. I'll and a lot of people who want to believe in that, people who don't want to believe in that, right? So there are ideologies, and I respect both the ideologies. Simple as that. But let's connect offline. Let's bring this as a topic and let's talk about it. Sure. And these two books, I would request people to look at Google and see these are actual mainstream books. I don't want to shy away from. Yeah. Okay. Just sure. Thank you so very much. Thank you, sir. And I'll have you soon, Suraj. Yeah. Stay safe. And thank you so much. Okay. Bye. Absolutely. Thank you. All right, Sachin. Welcome. Hi, Varun. Hello. I'm literally very happy to be here because I'm literally a fan of you and Vibhor, what you have done so far. क्योंकि इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ SSR का केस जब शुरू हुआ था उस टाइम से लेके, and people are saying that media trials चल रहा है. मेरे ख्याल से अगर YouTube नहीं होता तो शायद media trial होता भी नहीं, क्योंकि steps YouTube channels ने काफी पहले से लेने शुरू करे थे just from the day he died. उस टाइम पे तो TikTok भी था, TikTok, YouTube, everywhere it was going on that what exactly happened, what police is not doing, what people are saying, and everything was there on social media, not even on media. On social media it was there. So nobody can judge that whether YouTube में कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. That's entirely different part. Apart from that, मैं जो कहना चाह रहा था actually, I was thinking about Steve Pinto because उसका कोई जिक्र नहीं हुआ उसके बाद में. Steve Pinto की कुछ जो tags थे which he put on 17th of June on Disha Salian, that how she died, he tried to explain that on his hashtags. उस टाइम पर he also mentioned the name of Republic TV. अगर आप hashtags check करोगे तो उसमें Republic TV का भी नाम दिया है, जबकि उस टाइम पर दिशा सालियान को लेके इतना कुछ नहीं चल रहा था न्यूज़ में. That was on 17th of June. After that ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मोल्ड होती चली गई, चीजें परत पे परत, इट्स लाइक एन ऑनियन, आप परत निकालते जाओ और आपको चीजें मिलती जा रही हैं. काफी ज्यादा जितने लोग SSR को नहीं जानते थे दैट इज फाइन, लेकिन जो धीमे धीमे जानने लगे, the more they are getting attached to this movement as well. The same is with me. मैं उसकी मूवीज देखी थी, मैंने सुशांत की मूवीज देखी थी, लेकिन I was not into it much. But later on when I came to know about his personal life and what he did so far, it changed me a bit. And later on when I came to know more and more about it,
it was like a mess what exactly they have done with them. Absolutely. और अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर बात करूँ, these are the people who we chose. हम चूज करते हैं गवर्नमेंट को, हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा मिनिस्टर बनेगा, कौन हमारा होम मिनिस्टर बनेगा, who will be the people who will be protecting us. और जब these people come, ये जब सत्ता में आते हैं, उसके बाद में the way they change show their true faces. मेरे ख्याल से अभी तक इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा एग्जांपल होगा कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट चूज करें तो वाइसली चूज करें, वरना क्या क्या हो सकता है आपके साथ में. अभी ये सिर्फ हो रहा है महाराष्ट्र में. आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री. इट कैन हैपन एनीवेयर इफ द पीपल आर लाइक दीज अवेलेबल. वोट के टाइम पे दे एक्चुअली बैग, मैं यही वर्ड यूज करूंगा, दे एक्चुअली बैग. बट once they get the votes, they forget everything. Or right now, what Maharashtra government is doing, what Shiv Sena is doing, they are just focusing on only one thing, that how to finish this case. Sushant ka case, after a month, it got open. Kangana ko main kuch nahi bolunga because she was the one who rose voice against that. So I agree with Kangana that she supported that. Yes, these are the issues which she highlighted, like drugs and all, nepotism. Fine, but that made his case to be reopened. और अगर आप न्यूज चैनल भी चेक करोगे, फ्रॉम 14th of June till 14th of July, सुशांत का केस पूरी तरह से ठप हो चुका था. बिल्कुल. Which was not opened. Which was opened because of the social medias, whatever people were saying, whatever facts they were presenting, and whatever happened later on. I don't know what exactly people were thinking while voting these people. I think people have to be more vigilant, more aware about people whom they are voting. That is very important because you never know what will happen with you guys. Exactly, and that's the reason, Sachin ji, why people like me, people like, the so many of us who've come online right now, like ऐसे अपने एक platform लेके आए हैं, because things have been going on and on and on. I really thank social media. Social media has been such a blessing. Of course, it also is being misused, no doubt about it. But at the same time, if the cause is genuine, if people are genuine and they connect with, the real people who really want to change the face of our country, I think it can do wonders. And I think हमारी तरफ से एक छोटा सा एक स्टेप हमने भी लिया है, और भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं. I think the whole idea is let's support them and not bash them, not bring them down. जैसे हमने थोड़ी देर पहले, जब Vibhor was there, we used to talk a little bit about, with the jam. And the who would make marks. Yes, if they're talented, they will definitely excel. But groupism, I'm not a big fan of, the word nepotism. Nepotism is everywhere. It will happen. It will continue. You cannot stop nepotism. Stop gangism. Gangism is the bigger problem. It's like the cancer which is impacting everybody. Nepotism को आप कुछ नहीं कर सकते. If you're born in a certain family, अब अंबानी के घर में जो है, अब वो अंबानी ही रहेंगे, क्या करें वो कहीं चले थोड़ी ना जाएंगे, right? I mean, we also have to be realistic about it. But if he's not talented, if he's not, then making him the CEO will not justify, and the company will not survive. अब ऐसे बहुत सारे cases हैं जहां पर they've assigned somebody and that person has literally, जैसे कहते हैं ना, खत्म ही कर दिया पूरा business. So if they're not talented, they don't deserve it, they will fall. But at least give the chance, equal chance to everybody, and that's what we here at platform want to do. That ऐसी चीजें हैं जिन्हें बड़े बड़े नेटवर्क हो गए, जहां बहुत विजिबिलिटी मिल सकती है उन्हें ले. हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, वी आर ओके विद दैट. हमारे पास बड़े बड़े, हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए, हमें कोई बहुत सारी पब्लिसिटी नहीं चाहिए. ऑल वी वांट इज people like you, Sachin, I see Bijayan, I see Deepak ji, I see myself. We need to talk about it and we need to know about it. Ajitab ka case is an ideal example. Finding with Ajitab has been going on for, I sometimes get very, very, very aggressive. Has been going on for 3 years. An IT guy, just like us, who went to just sell his car to fulfill his wish of getting admission in a college, and he's gone 3 years. What is the police doing? What is the community doing? What is the CBI doing? Why are we not able to close it, right?
और इस चीज के लिए ही हम इस प्लेटफॉर्म को करना चाहते हैं कि पीपल लाइक अजिताभ, पीपल लाइक सुशांत, जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, इट हैज टू स्टॉप। ये लीडर्स कुछ नहीं करेंगे, ये लीडर्स कुछ नहीं करेंगे, ये आपने जैसे कहा राइट, ये भीख मांगने आएंगे, बेग करेंगे फॉर वोट्स, और हम लोग इनकी उस टाइम पे कर भी देंगे, बट what are they giving you? What are they giving you back? So they will not give us anything back. They will not give us anything back. The only thing they need is कि वो हमारे साथ सिर्फ तब तक है जब तक उनको जरूरत है. That's it. उनका काम निकल गया. They will not even look back at you or say hi to you. Nothing at all. बिल्कुल sir, I agree. No, absolutely. That's the only thing. Thank you for joining again, Sachin ji, and yes, I see justice for SSR. I think we should definitely continue that and continue talking about it. Let's not sit quiet now, because I think the whole intention of haters is कि किसी तरह ये die down हो जाए emotion, but हम नहीं होने देंगे. So thank you again for all the support. Thank you, Varun. Thank you. Bye bye. Hello, Abhiji, and you're on mute. All right, you're on mute. Hi. Yes, I've just unmuted. Varun, so I have your biggest fan here. Mom is here. Her name is Mansi, so we call her Mana. Okay, I am very much fond of you. नमस्ते बेटा, मैं इतनी ब्लेसिंग दे रही हूँ आपको और विभोर को अंतर दिल से। जो बातें मुझे इतने सालों में नहीं पता हुई बेटे, आप लोगों ने आंखें खोल दी। आई एम वेरी ग्रेटफुल, और मैं भगवान से दिन रात ये प्रार्थना करती हूँ कि सुशांत के केस में जिन्होंने भी ऐसे किया है घिनौना काम, भगवान उनको जरूर सजा दे, जरूर ताकि दूसरे कोई सुशांत के साथ ऐसा ना हो। किसी माँ या बाप का जवान बेटा जाता है, उनके दिल की हालत वही जानते हैं, और जिसने इतने अच्छे काम किए हैं दुनिया के लिए, उस बच्चे को इस तरह से बेरहमी से मारना अपने मतलब के लिए, मुझे बहुत दुख है। और मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ बेटे, भगवान आप लोग को लंबी लंबी उम्रें दे और इसी तरह सच्चाई को उजागर करते रहो। बहुत परिश्रम कर रहे हो आप लोग इस सत्य को लाने के लिए। मैं इतनी उम्र में समझ सकती हूँ ये कोई आसान काम नहीं है आपके और विभोर के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और जनता की आंखें खोलना, मैं फिलीपींस में बैठ के इंडिया के बारे में इतना पता हो रहा है, मैं 68 इयर्स की हूँ, मुझे अभी तक इतनी बातें नहीं पता थी। और हम लोग तो बड़े बड़े एक्टर्स के इतने फैन है, पिक्चर के लिए पागल। अब वो पागलपन सारा खत्म हो गया बेटा आप लोगों के उजागर करने से। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपका साथ दे, आप लोग इसी तरह से सबकी आंखें खोलते रहे और सच्चाई से मिलाते रहे, हम लोग को सच्चाई से अवगत कराएं, जो कि हम बिल्कुल बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं, अपने नशे में घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं अंदर क्या है, अपनी डेली प्रॉब्लम्स, अपनी दीन दुनिया, अपनी जो वो, हमें ये पता ही नहीं है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। मैं बहुत आप लोगों को आशीर्वाद दे रही हूँ और अंतर दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। बच्चे आप लोग खूब खुश रहो, मैं आप लोग मेरे बेटों की तरह हो, तो इसलिए मैं इतने स्वतंत्र होकर बात कर रही हूँ, आप लोगों को इतना आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चों खूब मेहनत करो और खूब इसी तरह से दुनिया की आंखें खोलो। हम लोग सब नींद में सो रहे हैं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते, पर आप लोगों के बोलने से हमारी आंखें खुल रही है कि ये भी हो रहा है। और आपको पता है हम लोग पुराने लोग हैं, हम अपनी भगवान पूजा पाठ दुनिया में जीते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं है। तो अब आप लोगों के बोलने से, और मैंने तो ये पूरे इंडिया में मेरे भाई बहनों को भी बोला है, सबको आप लोगों का ये दिया है कि सब देखो विभोर, और आप आंख खोल रहे हो, इसको सब देखो, जानो और पहचानो। दुनिया पहचानना भी बहुत जरूरी है बेटे आज की तारीख में, और ये तो कलयुग की शुरुआत है। उस आत्मा ने काम करके दिखाया है और उजागर किया है, नहीं तो कहाँ केस खत्म हो गया था, उसको कितने दिन के बाद निकाला। इसका मतलब कि वो भी चाहता है, भगवान भी चाहते हैं कि सत्य का साथ हो और झूठे का मुंह काला हो। भगवान आप लोगों को साथ दे। इस टाइम पे विभोर भी देख रहा हो। विभोर मैं बहुत बेटा आपसे इम्प्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको आशीर्वाद देती हूँ। आप इसी तरह से सच के साथ बने रहिए। आप एक वकील हैं, आप वकील होके, वरुण जी हैं ना? अच्छा वरुण जी, मैं विभोर के लिए भी बोल रही हूँ। विभोर इज आल्सो हियर। मैसेज तो पहुंचता ही होगा।
हाँ तो इसलिए बेटा मैं बहुत दिन से आना चाह रही थी, पर मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, कैसे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। अरे आप, आज बेटे ये ने आप कहा ही का नहीं मम्मी प्लेटफॉर्म है, आप आप चलो। जब भी आना चाहते हैं, जैसे भी आना चाहते हैं, आप सब आ सकते हैं, ये आप ही का है। एंड ऐसे ही बस ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद बनाए रखें हमारे साथ। आई थिंक दैट्स व्हाट बिल्कुल बेटा, और बहुत अच्छा लगा। हमने कभी टीवी में बोला नहीं था, इतनी उम्र में तुम लोगों ने चांस देके बोलने का वो दिया, इसके लिए भी आप लोगों का आशीर्वाद। साधारण जनता को बुला के आप बात कर रहे हो, ये इसके लिए भी आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से बेटा। सच के साथ बने रहिए, भगवान जल्दी से जल्दी बुराइयों को दूर करे, दुनिया से बुराइयों को दूर करे, एक स्वस्थ और साफ भारत बनाए। हम इतनी अच्छी संस्कृति के लोग हैं, हम लोगों के यहाँ ऐसा हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। हम एक पवित्र आत्माओं का देश था, और उस देश में इस तरह से घिनौनी हरकतें हो रही है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है बेटा। हम पुराने लोगों को, जो कि अच्छी दुनिया देख चुके हैं, एक पड़ोसी के लिए जान देता था, आज एक पड़ोसी की जान चली जाती किसी को पता ही नहीं चलता। ये एकदम बदलाव है। भगवान इससे सारी दुनिया को मुक्ति दिलाए, और तुम जैसे बच्चे हर घर घर में हो, तुम्हारे और विभोर जैसे बच्चे हर घर घर में हो, ताकि हर जगह रोशनी फैले और तुम लोग जैसे लोग दुनिया को दिखाए। थैंक यू वेरी मच बेटा, खुश रहो और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आई थिंक वी आर गुड, मॉम इज सॉर्टेड। So thank you very much Varun once again, and no matter which platform, no matter where you all are, no matter together, so I have also said this in comments earlier that we want Varun and Vibhor together, but if it is not working out, I've understood what you said in the starting. I've been here, I've been listening to you, and Varun, I so agree with you. Okay, I could not agree more. And we watch everyone, so see Smita ji, Ujjwal ji, Vibhor ji, you, Varun ji, everybody is important. Everybody has a separate role. It's a family, and in a family you need everybody to play a certain role, right? So we are all with you in playing that role. Thank you so much, Abhi. Thank you very much, for getting Varun. your mom as well. I feel really very blessed. Thank you. You know what I told her? I told her only I'll one see thing. you Mom, again. so many years you've been living here in India or outside, where have we had a chance as middle class family to speak out what we wanted to say? So if we're getting a platform to speak, I think you must use it. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. That's it for now. Thank you so much. You take care. Stay safe. Take care. You too. Thanks, man. Thank you so much. All right, Vijayan ji. Varun ji, namaskar, sat shri akal. Sat shri akal ji. Thank you. So आपके माध्यम से अब कुछ बोलना चाहता हूँ. So I would like to say on behalf of whole over world that what as a common man what we feel it. Okay. So first of all, I would say I'm from Assam. So it's a corner of a country where we don't get more focus from the government as well, from the center perspective. Yes, we have local government, but yeah, there are many people who don't get much of a exposure to the government bodies, and we don't get much support from the government much of the time. So here, what I just wanted to know about, I was just wanted to tell about something about child trafficking or abducting of the child. So here, like we as at this point of time, if we don't correct it, what is happening, it is very pathetic in the future, especially like Assam, Manipur, all the northeastern countries, like including state, including like Bhutan or Nepal or Kathmandu, where we don't have much security on all of this, because most of the time we hear it that child trafficking is very often happening on those areas as well. If you heard about Jharkhand or Kolkata recently, they have rescued like close to 11-20 people. So those things are happening, and we cannot let it happen next time. So struggling, now we're struggling. Okay, so those things we need to make more louder and louder in front of government, and the action should be taken, because kal खुदा ना खास्ता कुछ ना हो जाए, because I am married and I have a daughter, so I have to make my daughter's generation to be safer.
That is very, very important, because like I, as a mango man, as a common man, we have to think what my next generation, my daughter's generation, your daughter's generation should be. So if we do not build that kind of a good nation, it is like waste of living at this present moment. That is what I feel really. I would even say, there's no point of living such a life. Our life is waste. Seriously, seriously, Varun ji. That's what I say. If we cannot do it something for the future generation, if we cannot speak up now, then it'll be too late. You have very rightly said, Vijay, you have a daughter, I have kids, and if we cannot safeguard them, then why the hell are we even doing what we are doing? So I really respect that. No point. Yes. Exactly. No point, because today I thought of I will talk generally, but that emotions are buried into the heart. So that has to come out. We, as a common man, we have to speak up, and everyone should support this. It's not only Sushant anymore. It is not only Sushant anymore. It is not only Disha Salian. It is not only Jia Khan. It is about generation after generations. As Varun, Paji and Vibhor sir said, it is not only about the present, it's about future plus future. It is not like only one generation ahead. It is about next to next generation as well. At least we have to start this, already started, and we need to continue this, and we need to bring till to that main culprit to be in the jail, or it has to be punished till death, so that the fear should be coming to all the top criminal activities. Okay, that is the main objective should be there to every Indian, every humanitarian, I will say, not only India. It is all about the world. How we are living it, we have to vocal enough to reach to the culprit and hang till them. That is the only motive. What I personally feel it. And we all personally feel it. What is happening in the? That is the feeling for every single human being right now. Kahin par bhi hain, we have to make sure we get the culprits out. And up chahe wo they are political leaders, they are movie stars, they are whatever they are, that should not stop us from kind of literally killing them if we have to, and getting justice that way, because they have killed so many people, they have done so much wrongdoing. We have to get them to justice. We cannot just let them be free. So I agree that. And Paji, I don't understand why people see they have money. I agree. We are like lower middle class. We don't have money, or we don't have such, we don't have that comfortable level where we can go and have the luxurious life. But it doesn't mean that they don't have their son or daughter or their kids in family, right? Exactly. I don't understand how they will react when their son or daughter is involved in the child trafficking, and it has been like finished. Like how they will react, I don't understand. And seriously, people like, so now coming to that, now current situation is like people are targeting Varun, Paji, people are targeting Vibhor and trying to defame them again. So I don't understand why it is happening, because are they human being, or they are like only money minded? It's like a crazy about like Wolf of Wall Street. I don't understand why they are doing like that. There might be two conditions here. One is that SSRians are fighting, defaming you and Vibhor, might be. Okay, and second point is that PR team is targeting you and Vibhor for defaming. Why SSRians targeting Varun or Vibhor? Might be they are thinking like, okay, I am a big fan of Iskaran, I am a big fan of Ujjwal Trivedi, I am a big fan of Swamiji, and I don't like Varun and Vibhor. Could be one. So that could be there, because sir, please be honest from your आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सबका एम एक ही है. बिल्कुल. सबका एम एक ही है, चाहे आप हाथ से मारो, पेट से मारो, मुंह से मारो, या सिर से मारो, मारना एक ही को है. ये जानना, ये समझना सबके लिए जरूरी है. नहीं तो ये कभी भी हम लोग क्या होगा, अब बीच में फाइट होता रहेगा, फिर क्या होगा, एडवांटेज आ जाएगा दूसरे को और हम लोग वीक होते जाएंगे. और जस्टिस तो छोड़ दो, आपके हम लोग के खुद की दुनिया में भी रिस्क आ जाएगा. राइट. नहीं वही मैं, if we are not get, I'll tell you, मैं भी एक एनालॉजी, एक एग्जांपल यही देता हूँ कि we are all parts of the same body.
किसी का लेफ्ट हैंड है, कोई Yes. राइट हैंड है, कोई सिर है, यू नो, मारना है टांग से मारेगा, लेफ्ट टांग मारो, राइट. Eventually we have to kill, or you know, I apologize, मैं थोड़ा सा ज्यादा aggressive हो गया था, and there is no intention of killing, so मैं वो I really want to take that word back. No. My intention was कि ये जो गलत चीजें हैं, ये जो गटर जिसे हम कहते हैं, वो गटर cleanup is right now the most important thing. We have to do it in whatever way and form. But definitely, you know, thank you विजय जी, आपकी इमोशन से I can connect, and बस ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही हमारे साथ आके बातें करते रहें. We will definitely have multiple, you know, more sessions, और कल का सेशन आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कल आप ही नहीं, बहुत सारे सबके लिए जरूर बहुत बड़ा आई ओपनर होगा, जहां एक ऐसी ही डेथ के बारे में और बात करेंगे जिसके बारे में लोग बहुत देर से जानना चाहते हैं. सो आई विल डेफिनेटली लेट एवरीवन नो इन द लास्ट 5 minutes, बट ऑफ कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज कंटिन्यू सपोर्टिंग. जितना आप करेंगे उतना ही ज्यादा हम और ऐसे इश्यूज को लाएंगे. और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे इश्यूज हैं, you need to reach out to us. Please reach out at info@we-stand-for-justice number 4 है बीच में .org. वहां पर आप हमें email करें. Our team will look into it. We will validate and we'll get people to speak about certain things and get you, you know, or that person some justice. So we will definitely try to do that. So thank you once again, Vijay ji. Thank you, Varun Kaji. Thank you. Sat Shri Akal ji. Hello, Deepak ji. And now I'm going to take more people together. Hello, आप mute पे हैं. Namaste. नमस्ते जी. नमस्ते. कैसे हैं आप? How are you? Very good. Very good. Good. First of all, good morning. It's morning here. I'm in UK. Okay. And suddenly I was sleeping, you know, out of the blues. I get this message because I've pinged you on the YouTube for the bell icon. Okay. Thank you. So you're the only first person that I put as a bell icon. I never go into subscription or something. No, it's important because I need to be updated. हमारी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि हमको मालूम नहीं कि बाहर क्या चल रहा है. Because everybody has got a problem, everybody has got a trouble. How should we address each other about this? Is that where we have is a Varun Kapur show. Thank you so much. I would say मैं आप लोगों का इतना आभारी हूँ because there are a lot of things that has been going in my mind as well. कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, but we don't execute it. Yep. Because we are all involved in our life somewhere or the other that we don't come out of it. और हमको strong बनना पड़ेगा regardless, as the gentleman before me, he said कि कुछ भी हो हमको एक ही चीज रखना है कि हमको aim करना है उस जगह पे जहाँ पे हमको target करना है. Be it can be a public media, it can be some channel, it can be anything. And what I would say is continue doing what you're doing. बिकॉज कहते हैं ना कि फोर्स को रिपेलन बहुत होता है, खींचने वाले बहुत होते हैं. एंड द मोर दे पुल हार्डर द मोर यू विल हैव अ हार्ड इम्पैक्ट. सो जितना वो जोर से उठाते हैं उतना ये करते हैं. सेकंड थिंग इज आई एम इन यूके. इफ यू नीड एनी हेल्प एनीथिंग एज अ SSRN volunteer, I am ready to do whatever. Second thing is your show. I would like to come because I speak a lot of things on the spiritual base. Something on a depression kind of people. आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, ये कभी इंडिया में मैंने टर्म नहीं सुना था, डिप्रेशन. Now it is coming a lot, especially in India. ऐसी जगहों पे हमको ये देखना है कि लोग डिप्रेशन किस बात का है, क्या कारण है, क्यों ये आजकल आ रहा है. It's nothing. It's the workload that we take on ourselves so much. And lot of things are happening around, but the focal point is to get justice, and the justice is not given through one medium, it is given through lot of other mediums as well. So वो medium source of education होता है, source of media होता है, source of radio होता है, source of campaigning होता है, source of march past होता है, source of, you know, you can say light जलाते हैं हम, candle ये करते हैं, महामृत्युंजय हो गया. This was for his peace, but whatever comes along with this is the energy, the vibe, the aura that comes out. And we are standing, people are looking for it. Everybody, like जैसे हम लोग कुछ research करते हैं. I see only, I do watch Republic TV. उनका कुछ मुद्दा बहुत अच्छा होता है, but it goes on to an argumentative debate जिसको बोलते हैं. जैसे वो कहता है ना कि let's debate, I switch off that channel because it's too loud. नहीं, सच्ची में हमको बैठ के इतने, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, बट लेकिन उस चीज को बार बार बोलने से होता है.
You keep on repeating it, keep on repeating it. And I would say एक यूएस की कोई लेडी थी जिन्होंने कहा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको मोटिवेट करने के लिए कुछ चाहिए. So I would say yes, we need people to motivate. आजकल ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सी एवरीथिंग हैज गॉट प्रोज एंड कॉन्स. हर चीज का एक मेरिट और डीमेरिट होता है. हम लोग मोबाइल फोन का आई डोंट थिंक सो समबडी मेक्स यूज ऑप्टिमम लेवल पे. कोई भी मोबाइल फोन का मुझे नहीं लगता है कोई 20% से ज्यादा यूज करता है. 24 घंटे मोबाइल फोन हाथ में रहने से मतलब ये नहीं कि उसका हम लोग 100% यूज करते हैं. उस पे गेम खेलते हैं, कुछ करते हैं, टिकटॉक, वाहियात, व्हाट्सएप, देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग एंड पीपल लाफ एट ऑफ माय एज आल्सो. मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं कहता हूँ दुनिया को हुआ क्या है. तो व्हाट आई मीन टू से इज वी हैव टू कम आउट ऑफ इट. इट्स नॉट दैट इजी टू कम आउट एंड साइमल्टेनियसली वी हैव टू अवेयर पीपल कि उनको बाहर निकलना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कीप ऑन टेलिंग पीपल डोंट ईट ऑन अ melamine plate, eat in a ceramic plate. Don't keep your water in a plastic bottle, keep in a glass bottle. Because ये एक छोटी छोटी चीजें जो ऑन लॉन्ग वर्ड्स हम लोग इस चीज के यूज टू हो चुके हैं, विच इज नॉट हेल्दी. हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक निकाल दो, प्लास्टिक निकाल दो, प्लास्टिक निकाल दो, लेकिन कोई इस बात पे बात नहीं करता है. हम लोग वही प्लास्टिक की, ये देखिए मैं बात करता हूँ, मैं भी प्लास्टिक की बोतल लेके ही बैठा हूँ. So what I mean to say, we preach, but we don't practice. Yes. True. And people do speak so much के ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. But at the end of the day, वही होता है जो, देखिए क्या होता है कि इसमें हमारा दोष बहुत है. हमको वही दिखाना चाहते हैं ये लोग जो हम लोग देखना चाहते हैं, और पब्लिक वही देखना चाहती है जो उनको अच्छा लगता है. विभोर जी और वरुण जी जो दिखा रहे हैं, कुछ पब्लिक, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ना झूठ बोल रहा है. Why should somebody come on a public domain and say lie to you in front of millions and millions of people? और जो खुलेआम किसी सेलिब्रिटी का नाम लेता है, किसी बड़े इंसान का नाम लेता है, जिसके नाम से किस चीज का इम्पैक्ट हो सकता है, तो why is he coming and openly and telling? So there should be some reason about it. I've been an SSRE and I want to say something. तो मैं चाहता हूं कि किस तरह से मैं उसको एक्सप्रेस करूं. तो वन ऑफ योर शो इज रियली वेरी गुड बिकॉज, और एक और बात बता दूं, लोग आजकल आप लोगों को कॉपी कर रहे हैं. इफ यू गो एंड no really I'm telling you, that guy who, what's his name is Narayan Rane son or somebody, Hitesh Rane or somebody came, उन्होंने and the guy was telling this is unedited. ये आदमी कुछ बोलना चाहता है, this is uncut, this is unedited, ये किया. Do you know, like that day Vibhor ji was telling, whatever we are talking, it is not edited, it is not ये सब सामने लाइव हो रहा है. या इट्स नॉट स्क्रिप्टेड और समथिंग. जो मुंह में आ रहा है हम बोलते जा रहे, जो हमारी दिल की बातें हम बोलते जा रहे. ऐसा तो नहीं है एक डायलॉग बना दिया, ऐसा पब्लिक को अच्छा लगेगा, फ्लैशिंग कर दिया, पीछे से तालियां हाँ ढू ढा कर रहे. सो व्हाट आई मीन टू से, देयर इज लॉट ऑफ पीपल दे आर कॉपिंग. और वो जो राणे ही बोल रहा था, बोलता मेरे पास इतने पुख्ता सबूत है, मैं खाली सीबीआई को जाके दूंगा. तो व्हाट आई मीन टू से इज पीपल आर ट्राइंग टू कॉपी यू, बट देन अगेन दे आर ट्राइंग टू डिफेम यू. बट नेवरदलेस, वो कहते हैं ना, चिंगारी जली है, अब ये आग बन के ही जला के रखेगी. सेकेंड थिंग, कहते हैं कि जो भी शिद्दत से काम करे, जो भी, तो पूरी कायनात उसमें जुट जाती है ना, जो जनाब कह रहे थे अभी कुछ देर पहले. yes. तो जो भी शिद्दत से काम करे ना, व्हाट आई मीन टू से इज वी हैव टू डू इट रिलीजियसली, वी हैव टू बी फोकस्ड एंड वी हैव टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन. वी डोंट हैव टू बर्न. कुछ दिन पहले ऐसा हो गया था कि विभोर जी बहुत एग्रेसिव हो गए थे एक डॉक्टर के शो से 2 दिन पहले. एंड इट इज ऑब्वियस टू बी एग्रेसिव, बिकॉज कहते हैं ना, कभी कभी माचिस जलाने के लिए भी यू हैव टू स्ट्राइक इट. अनलेस एंड टिल फायर नेवर कम्स, देयर इज नो अदर फायर लिट. Right. So we have to be burning, but we have to be in a way where we don't hurt anybody, we don't harm anybody. Yeah. We have to voice it out. Yes, we have to voice out reality. We have to voice it out, but we have to voice it out in such a way that it conveys the message to everybody, and especially the younger generation. We have to tell them, come out of that PUBG and fight a real war. Yes. Yeah, ये दिमाग के Very अंदर well. खेलना, Very well. मैंने ये जीता, वो जीता, no. Come out, Yeah. come fight first for yourself, then you will be able to fight for somebody else. True. You have to fight for yourself first, then you will be able to fight for yourself. So अपने लिए लड़ना सीखो, दूसरों के लिए लड़ोगे,
And whatever you all are doing, I'm telling you, hats off, Vibhor ji. And I also watch, I will tell you one more thing. There's Chasing Dreams. If you see her videos, Right. तो और यही होता है कि लोग सवाल पूछते हैं. मैं पूछता हूँ सवाल क्यों पूछते हो? वो लोग आपको कुछ चीजें दे रहे हैं. इट्स लाइक अ जिग्सॉ पजल. यू हैव टू सॉल्व इट. Exactly. या दे आर गिविंग यू क्लूज. हर चीज मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, हर चीज मीडिया में नहीं बोली जा सकती, बिकॉज दैट कैन क्रिएट एन अनरेस्ट. हर कोई विभोर और कहते हैं ना कि ये नहीं होता है, वरुण नहीं होता है कि उस चीज को शांति से ले या उस चीज को टॉक करे. सम पीपल माइट जस्ट गो आउट एंड ट्रस्ट मी, लकीली जैसे विभोर जी और आप कहते हैं कि ये तो लॉकडाउन है इसके लिए बच गया, वरना वो मन्नत जन्नत सब चले जाते. People have gone so much to an aggression, but we have to stream them, we have to channelize them through a right direction, to the right focal point. कहते हैं ना, focal point is more important. जहाँ से beam निकलती है, जहाँ से laser निकलता है. तो motivation always comes is when you talk to people, you have to reach out one on one, but it's not possible to reach out one on one, but channel can reach out to millions of people like you. और वही होता है, आत्मा से आत्मा जो जुड़ती है. तो I don't know how I got it. My sister also watches you. She works for Capgemini. Okay. She's an ITN and she's in Pune, and she's been telling Deepak, it's so shocking. And we keep on exchanging, and I keep on telling her, spread this as much as you can. Spread this as much as you can. I've been doing this. Anything that I can do, you know, बहुत अच्छा We'll लगा. connect. Why don't you connect offline? Info at we stand for justice.org पे आप email करें. We will connect with you. And Definitely. we will. And I can talk for non-stop 24 hours, inspirational, motivational. No, Good really, to I'm know telling there you. is somebody else who can do better than me. Huh? No. नहीं. आपके comparison, I'm telling you, I'm nothing. I'm just a small जर्रा कहते हैं ना. लेकिन ये जर्रा तिनका बन के ही हम लोग को इन लोगों को हटाना है. We have to clear this dump, and there are a lot of things. जैसे असम में कुछ चल रहा है. There's a lot of trafficking. आप ये child trafficking की बात करते हैं, यहाँ पे तो cow trafficking भी होता है. Yes, sir. अब बहुत कुछ है ऐसी बांग्लादेश में यहाँ पे करोड़ों प्लेटफॉर्म के So इस this प्लेटफॉर्म platform पे हम has to be, yes. सारे टॉपिक्स को एक्सपोज करेंगे, बात करेंगे, कीपिंग इन Yeah, माइंड we have to talk how we can use, you know, अगर कोई चीज आपके हाथ में टूल दिया जाता है. See, I'll tell you one thing, that we are ourselves as an atom to ourselves. Atom can be used for atomic power, or atom can be used for atomic bomb. So we ourselves are responsible. Either we have to become a right power, or we have to become a wrong bomb. Yeah. So as I say, it's our choice. So how we do and what we do, it's up to us. But whatever you're doing, it's जैसे विभोर जी कहते हैं, don't trust me. Trust your judgment. Yeah. Trust your gut feeling. I'm just going to give you points. You have to join the dots. अब उसका आप गधा बनाते हो या कलिंगड़ बनाते हो, ये आपके ऊपर है. तो what I would say is hats off, sir. इतनी लोग आपको दुआएं दे रहे. And blessings Thank you, from sir. my Thank you side so and much. on my behalf, from Thank you. everybody, my family. सालों साल से हम हमारे माँ बाप को Thank नहीं you. मिलते. Really appreciate On an I would say everybody. It's very, very, very hard earned money that we have put these people on power. We have to Yes. throw them out because it's nothing. It's a shadow government and a secret society. They work with each other, and we have to And kill we the will. shadow government. Yes, We will. We we will. have to. All right. We will do it. We all will do it. We all will do it. Everybody has to have Play a role. Vibhor in them and Varun to voice Yeah. it out. Thank you, sir. Thank you, Thank and you. I'll Thank connect with you. Sure. I'll email you. I'll email you with Yes. a star Deepak Jungle Sure. London. So you आप, can know, because I've been trying to reach you from last maybe 15 days since I've been oh, I'm watching so your show. sorry, sir. No. मैं बहुत You don't need to be sorry, because Yes. मेरे जैसे करोड़ों और आपको रीच करना चाहते हैं. मैं बहुत धन्यवाद हूँ that I connected you. So I would like to reach out to somebody else as well, Sure. and I would Sure. say आप उस somebody email पे wants. करेंगे, the team will get the email. That's why I'm now giving a info वाला. Info say it is just not blocked on me. It is on Okay. everybody. So somebody will definitely look at it. So what is it like? Info at मैं actually अभी पेज इस पे डिस्प्ले करता हूँ, but No info problem. Okay. at we जो letter V stand number 4 Yeah. justice.org We हमारी stand for website है. justice. Yeah. Yeah. I'll Yeah. do We stand for justice. आप Google करें, you'll find the website और वहां पर No email problem. address भी होगा. Otherwise, this is the email info at website का नाम. ठीक है? No Thank you so problem. much. I'll do that. Thank Sure. you so much, and Thank you good so luck. much. All the best. We are all with this fight.
Absolutely. We are all in together. Thank you so much. All right, Mary. Yes. How are you? Welcome back. You are mute. I don't know why. You're mute. You're mute. No, I can't hear you. You are saying something, but I can't hear you. Nope. No, no, can't hear you. Why don't you try? Let me take the Canadian Vin Diesel. Yeah, try the audio. You can try it. But yes, Canadian Vin Diesel ji, you are on. Hey, buddy. How are you? Very good. How are you? Good, man. Hey, listen, last time it was good to talk to you about Vibhor and I. We were just trying to figure out things in India. So, hey, listen, I want to thank you for everything. You and Vibhor doing a great job. मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूँ. I stay away from mom and dad there in India. So, yeah, we're doing everything as SSRians to, get Sushant and Disha both justice. We can't forget Disha Salyan because, as you can tell, there's the same number of people. Absolutely. They were both connected, and it's all the connection. Now, one thing that keeps coming up, a lot of people are saying कि CBI के पास इतना proof है about Disha Salyan. They're not doing much about it. NCB के पास proof है. वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? Forensic team in IIM in Delhi, they have their main people working on this. They have all the proofs from the forensics. Where they're not doing anything. They were supposed to release the report today, but they're not doing it. Now there's a bigger picture. What I'm hearing from, I don't have any sources or anything, but reading the social media and watching smaller channels, smaller people, they're all saying the same thing. This is going to be huge. And I know Vibhor might know about it. You might have heard about it. कि उन लोगों ने एक हफ्ते के लिए शायद इसलिए डिले किया होगा because हो ये रहा है कि the information is so huge with big people involved, everything from the top to the top movie stars involved, कि it might actually topple the government. And because when that happens, we all have to be careful, like you're careful with your channel. Vibhor might be doing the same thing. And now people are going to be taking a little bit of backseat because what Delhi, what the IIM team is, the forensic team is getting together with CBI and with the government, and they're trying to figure out a way to get the president's rule. Because what that's going to do is once they release all these big names, government is going to fall, and for that they need a right backup plan. I think that's what's going on right now. Is उन लोग बहुत careful हो रहे हैं, Modi ji and Amit Shah, everyone is on it. They're watching everything. People might think they're not. They might not respond to your tweets. They're busy people. They're running the country, but they know it. You know it. Vibhor knows it. That things might be happening in the background right now. That if things were to happen, there'll be riots. There'll be things happening. So they need a proper system to control all of that. So I think it's a backup plan, and it's a damage control that they're trying to do. So, guys, SSRians, full power to all of us. It's been 90 days. We've been at it. Look at Varun. He's timelessly working on it. His doctor was giving him a hard time, but I've been there, done that. My doctor tells me, "What the hell are you doing?" But you know what? We gotta do the right thing for the country, and that's what we've done. So, hey, buddy, I just wanted to get on it. This is my first time ever getting on live with anyone, and yours is the first channel. So, I watch everyone on and off, but listen, just hang in there, bud. You're doing the right thing. And SSRians, we're here with Shweta and the family. Thanks again, guys. I really appreciate it. Sure. Thank you so much. Thanks, you, and keep the support coming. Thanks. Take care. Bye now. All right, Maddie, gonna try one more time. Hello, can you hear me now? Yes, loud and clear. Okay, finally. Okay, I just want to say,
just appreciating what you're doing, man. I mean, doesn't matter, and people can be judgmental, people get emotional. That's okay. Obviously there's a lot of information, people watch news channels, there's a lot of fake media, PR media, social media, and all that stuff. I think it's all up to an individual how you process that information and kind of interpret it, right? So some people evaluate it in a different way, and people can comment about it, criticize about it. So I think it doesn't matter. You and Vibhor might do it differently, and collectively, if you look at the bigger picture, we're probably over one cause. I think I just came to say I don't have any particular questions or comments. Obviously, I've been following you guys, and I just came here to probably give my 2 cents of probably appreciation, and keep doing what you're doing. And I know it takes a lot of things. I know it's nearly probably midnight there, Friday midnight for you. Almost midnight. And I was hoping, I'll tell you one thing. I'm notoriously known for these extended live shows because let me use the word warned. I've been warned by the team as well that please don't extend it. But the problem, and I don't call it a problem, but that's the thing, right? The beauty that we really want to connect with people, and we really want to make them feel that this is their platform. It's not me. It's not about anything else. I know I'm going to have a very, very, very long weekend because I have a session in the morning and then I have a session in the night. So it's going to be back to back to back. But I think that is the reason why we are doing it. It's because of you guys. You guys want to talk. You guys really want to share your thoughts. You also want some updates. So we will continue to bring that. We will continue to do that. But at the same time, we really want to hear you out so that agar hum log nahi bolenge, to koi nahi bolega. And the whole platform is all about that. That we, again, we don't offer any legal services. We don't want any, we are not offering any medical services. No, nothing like that. All what we are offering is that comfort, that shoulder, that ear, that the sound platform. Jahan par aake you speak, everything falls in place for everyone. That's the whole idea. Nothing more, nothing less. And just what all we want is support. That's pretty much it. So thank you for all the support, and just keep the support coming. That's more important for us. Yeah. Have a good day, man. You too. Thank you so much. Thank you. Bye. All right. Take care. Hi, OP. You are mute, so let me try to unmute. OPG, can you hear me? I'm from Dallas, and Okay. I generally don't involve much in Indian politics. I'm more in busy life in America. And but when Sushant incident happened, initially I thought it's something wrong. Like any others, I believe the same story. But recently, when I'm connecting the dots, it made me shaken inside that ये ऐसा country है तो इस तरह हो गया तो अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होगा. So something we should do, especially आप लोग already fight कर रहे हैं, तो मैंने सोचा था एटलीस्ट थोड़ा हाथ लगा दूंगा ताकि थोड़ा खुश हो जाएगी. That's the only reason I jumped in. All of a sudden, lot of time मैं invest कर रहा हूँ इसके ऊपर. Just only to make a point. मेरा जो रोल है मुझे करना है. That's all. क्योंकि नॉर्मल मोमेंटम के सब लोग जाना पड़ता है और खड़ा होना पड़ता है एंड देन वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम. वो बहुत मुश्किल है, ओल्ड स्कूल है. अच्छा है सोशल मीडिया आई है, आसान से हमारा वॉइस जल्दी दूसरे तरफ के जाती है एंड इट्स वेरी गुड प्लेस एंड उसका अच्छा उपयोग करना है. एंड व्हाट एवर यू गाइस आर डूइंग, ये जो प्लेटफॉर्म लाया आपने, एक्चुअली ये सारे लोगों को एक क्योंकि जब दर्द आती है किसी को बात करने से वो उतर जाती है. ये जो फील है एसएसआर का जो साथ देखे तो जैसे सबने बोला है, दिस इज अपना अपना खुद का जो स्टोरी है और साथ में जब वो ड्रीम जब खत्म हो जाती है तो सब हिल जाते. तो उसमें ये जो फील है when दूसरों के साथ बात करेंगे तो थोड़ा कंफर्ट मिलती है और उससे एक नया रूप मिलता है. एक बार आप लोग में आई वाज नॉट इनटू ऑल पहले आपके सबके ट्विटर्स में मैं था नहीं. पहले मैं उज्जवल की देखता था,
इश्कन के देखता था, बाद में आपका करेक्ट हुआ, इसके बाद विभोर के करेक्ट हुआ। अभी थोड़ा मेरा इंफॉर्मेशन जल्दी आ रहा है, जिस गुड, विच मेक्स मी कंफर्ट, बट स्लो भी है बीच बीच में, ताकि हमारा साइड नहीं है, गवर्नमेंट के सिस्टम है, उसको सब क्लीन अप होना टाइम लगता है। सो पेशेंस है। एक तो आप लोगों को थैंक यू बोलना है एक ओपन प्लेटफॉर्म लाने के लिए, एंड नेटिव हमेशा रहेगी, क्योंकि वो लोग ऑर्गेनाइज्ड मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, हमारे तो इमोशनल एंड देश की जिम्मेदारी से कर रहे हैं, तो इससे और कुछ भी नहीं है। सो SSR के अंदर जो भी है लीडर्स ऑलरेडी जो चला रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अलग अलग फंड्स निकाल रहे हैं, डाइवर्शन भी करते हैं, तो एक एक डाइवर्शन के लिए एक एक आर्मी का तो 3-4 लोग पॉइंट रख के वो लोग चलाना पड़ेगा। टीम वर्क से ही होगा, बिना टीम वर्क तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास पैसे भी है, करेक्शंस भी है, नेटवर्क भी है, दे कैन इजिली ब्रेक एंड नैरेटिव बदलते जा सकते हैं, तो वो तो हमेशा होगा। बट ये हम जो कर रहे हैं आगे जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं, और हमारे कंट्री का जो रिस्पेक्ट है, सिस्टम को वापस लाना है, उसके लिए कर रहे हैं। सिस्टम ब्रेक होती है, बट हमारा जॉब है, जनता की जॉब रहती है सिस्टम को फिक्स करना है, ताकि वो सिस्टम से हमें डिपेंडेंट भी रहना है, क्योंकि आदमी से तो सब कुछ नहीं होता है, एंड सिस्टम ही चलाती है। सो उसके लिए मेरा को आई एम ट्राइंग टू गेट एंड हेल्प एज मच एज आई कैन। हर चीज़ के लिए खर्चे होती है, नथिंग कम्स फ्री, एंड टाइम लगता है, रिसोर्सेस लगती है। इस तरह जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इट्स नॉट ईजी, देयर सो मच प्लानिंग बिहाइंड द सीन्स। ओके, पॉलिटिकल प्लानिंग हो सकती है, कंट्री की प्लानिंग हो सकती है, एक नैरेटिव की प्लानिंग हो सकती है, अच्छी बात है, दैट इज गुड। हमारे से व्यूवर से जो भी है, वी शुड कंट्रीब्यूट व्हाटएवर वी कैन, बट साइलेंट कंट्रीब्यूशन, डोंट मेक नॉइस अबाउट इट, उससे कोई फायदा नहीं है। सेकेंड थिंग है, आप जो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लीगली यू शुड पुट ए डिस्क्लेमर। वन, जो भी ओपिनियंस देता आदमी यहाँ पे आता है, वो खुद का है, उसी का है, सो वो एक लगाना है। दूसरा, जो जिसको अभी नेगेटिव है, आप कामली वॉकआउट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शोर मचाने की जरूरत नहीं है। that has to be put in the game, because आपका सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी भी वीक होती है, बट आपका मैं पॉइंट समझता हूँ, हर आदमी का अपना आवाज देने की जरूरत है, सो दैट इज गुड। बट एंड ऑफ द डे आपका भी जो प्लान था या फोकस थी, एनर्जी किस तरह डाइवर्ट करना है, उसको आपको करना पड़ेगा। एंड तीसरा, जो दो क्वेश्चन मैं वहाँ पे लिखा था, आपका टीम उसके बारे में सोच के बता सकते हैं। हाउ अब ये जो पुलिस है, जब फोन आया था हेल्प नहीं करेंगे तो, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसा कुछ सिस्टम में नहीं है कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर आया तो भी पुलिस लोग उसको इमरजेंसी ओवरराइड बटन दबा के दे कैन ओवरराइड एंड हेल्प द पीपल। क्योंकि मुंबई पुलिस में दिशा भी फोन किया था, सुशांत भी फोन किया होगा। राइट, नो आई थिंक ऑफ कोर्स पुलिस का तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, वो हम सब जानते हैं इस टाइम। मुंबई पुलिस इज डेफिनेटली प्लेइंग अ इंटीग्रल पार्ट इन दिस होल, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की बात करें या पहले की बात करें, राइट, इन द डेथ इटसेल्फ। बट वो कितने लेवल पे आगे क्या उनका रोल प्ले होगा और आगे कैसे होगा, आई थिंक वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। But at the same time, I think nobody can defy the fact कि भाई पुलिस ने बॉच अप नहीं किया। Nobody can. That I can वो तो सबको सारे पुलिस सिस्टम तो खराब नहीं हो सकती है। 20% होगा, 30% होगा, 70% तो नहीं हो सकती है। वो लोग भी बटन प्रेस करके भी ओवरराइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम में रहना है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। उसके लिए हम जैसे लोगों को बोलना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को कंटिन्यूअसली बाहर आना पड़ेगा। वी हैव टू पुश द पीपल। अभी जैसे मैंने कहा, राइट, हमारा ये था कि छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटी सी जगह, एंड somehow we are so much connected with people, but still we are at risk, our team is at risk, right? आप ये सोच सकते हैं कि मैं यहाँ बाहर रह के, और हमारी टीम के मेंबर्स ग्लोबली हैं, इट्स नॉट सारे इंडिया में है या कहीं, सारे ग्लोबली है, everybody is at risk.
सो इमेजिन वो मुंबई पुलिस की अगर जो आप बात कर रहे हैं, राइट, अगर कोई होगा भी तो दबाने वाले उसके ऊपर 4 और होंगे. So I think, everybody fears for their family. That is definitely the first thing. So that's what I really want to focus on. But yes, again, I said हम इस टॉपिक को खत्म नहीं होने देंगे. हम आवाज के बारे में हेलो सपोर्ट नहीं मिल. ओके, I don't know if I can hear you. या अब आवाज आ रही है. थैंक यू. हाँ, तो बेसिकली बस यही बेसिकली. I want to thank you and for keeping this platform. मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, काफी लोगों को वेट Sure. थैंक यू. बाय. गुड लक. Thank you so much. Thank you. Good night to you. Hello, Anirudh. Can you hear me? Yeah, I can hear you, You sir. Mic are. mute पे था. Yes. Hello, sir. First of all, I just want to thank you for having me. आप अगर नोटिस कर रहे होंगे, मैं पिछले एक हफ्ते से आपको इधर उधर से कभी इंस्टाग्राम पे कभी टेलीग्राम पे मैसेजेस भेजे जा रहा हूँ. Yes, sir. बट सर जेन्युइनली आई फील दैट आपने एक जो वो एक रहता है ना कि कॉमन मैन भी कुछ करके दिखा सकता है, वो वाली एक फीलिंग सीरियसली जगाई मेरे दिल में भी. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहता था बिकॉज वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला जब आया एंड आई हैव जस्ट बिकम अ फादर 2 months ago, तो आई थॉट कि अब जैसे ही आपको वो अपने पे आती है वाला हिसाब है, तो दैट आई टुक दैट सिचुएशन वेरी पर्सनली बिकॉज मेरे को लगा कि अगर कल को मैं अपनी बेटी को इंडिया लेके जाऊंगा या मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम बैठे नहीं रह सकते. एंड द अदर थिंग आई थॉट वाज कि अगर ये लोग क्रिमिनल्स लोग 24 घंटे लगे रहते हैं तो हम 24 लोग मिलके 1 घंटे भी लगाएंगे तो शायद उसको काउंटर कर पाए. तो आई ट्राइड टू थिंक दैट चलो दिन में 1 घंटा तो लेट्स ट्राई एंड पुट इन by just maybe retweeting and then the other activities that we are seeing on the group that वो भी I thought कि चलो ठीक है, let's try that as well. Maybe group chat पे बात करके थोड़ा idea share करके we'll be able to take this movement forward. And again sir, आपका दूसरा जो एक चीज मैं अपने पर्सनल एक तरीके से बोलना चाहता था, जब वो मैंने वो डॉक्टर वाला शो भी देखा एंड द वे ही रिएक्टेड, आई पर्सनली थिंक कि अगर मैं एज ए पायलट कोई मुझे आके बोलेगा कि मैंने एलियन देखा है, तो पहली बात तो मैं भी नहीं मानूंगा बिकॉज वो आइडिया इतना फॉरेन है आपके लिए. तो मे बी फॉर द डॉक्टर दैट आइडिया वाज सो फॉरेन दैट ही डिडंट बिलीव इट. होता है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं. एंड आई थिंक विभोर सर ने भी काफी सारी बातें ऐसी बोली जो आज की डेट में सच हो रही हैं, भले वो पूरी जैसे वो बोल रहे थे वैसा सच ना हो, बट इतने आउटलैंडिश आइडियाज को एक तरीका होता है बोलने का कि आई थिंक अगर आप जाके एकदम डेटा डंप कर दोगे सब लोग के ऊपर तो वो भी वी डोंट हैव दैट मच ऑफ अ मैच्योर ऑडियंस. आई एम नॉट सेइंग दैट हम लोग मैच्योर नहीं है, बट लोगों को सीधा मसाला चाहिए, तो वो एक बार मिल जाता है तो फिर उसी के ऊपर बात होनी शुरू हो जाती है. राइट. नहीं, बट जैसे कि हमने शुरुआत में मैं बात कर रहा था इसके बारे में एंड आई बीन वेरी वोकल अबाउट इट, राइट. आई मीन वो जो शॉक फैक्टर था वो रहेगा और आई थिंक दैट इज हिज यूएसपी, वो रहेगी. बट एट द सेम टाइम आई थिंक एक चीज आपको अगर इस चीज से व्यूज या पैसे या अपनी चैनल बढ़ानी होती तो वो 5 घंटे के शो पे आप 100 क्लिप काट के डाल सकते थे. आई विल बी जस्ट ऑनेस्ट एंड मैं सब लोगों को बोलूंगा जो लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि आप सिर्फ फेम के लिए कर रहे हो, सिर्फ आगे अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो. कौन सा दूसरा ऐसा यूट्यूबर है जिसकी चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोग आके बात करते हैं? आप इफ यू वांटेड टू आप वो सारे सेंसेशनलिज्म वाले आइटम्स, वो 5 घंटे का स्ट्रीम, 3 घंटे का स्ट्रीम, 5-5 मिनट के आप 100 वीडियो बना सकते थे और सब पे आते लाख व्यूज, ऐसा नहीं है कि नहीं आते. बिल्कुल. तो आई पर्सनली फील कि सर आप वेरी जेन्युइन पर्सन एंड आई नो द ग्राइंड दैट समवन गोज थ्रू टू कम टू दिस कंट्री एंड यहाँ पे अपनी लाइफ बनाना कितना मुश्किल होता है, और उसके बावजूद आप दिन में अगर 5 घंटे निकाल रहे हो तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग सर. हैट्स ऑफ टू यू. नहीं, और थैंक यू. आपने इतना आई नो वी हैव नॉट बीन एबल टू टॉक वेरी मच, जो आप बात करना भी चाहते हो और आपको कनेक्ट करूंगा मैं आपसे, बट सिर्फ इतना कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस और बाकी सारी चीजों के साथ एसएसआर की जो मूवमेंट,
आई रियली अप्रिशिएट कि Totally आपने agree, sir. समझा, आप समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. सो थैंक यू सो मच नहीं फॉर नहीं सर, दैट. एंड मैं बोल रहा हूँ अगर अल्टीरियर मोटिव है तो है अल्टीरियर मोटिव भाई, हमको हमारे होमलैंड को आगे लेके जाना है, ठीक है. बिल्कुल. बाकी लोगों के भी अल्टीरियर मोटिव के साथ भी अगर सही काम हो रहा है तो होने दो ना, तुमको क्या पड़ी है किसका क्या मोटिव है. एब्सोल्युटली. बस सर ये दो तीन चीजें बोलनी थी. आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम. आई नो दैट आप भी अभी 12 बजने वाले हैं जस्ट. थैंक यू. 12 बज गए पूरे. So, जिसका भी हैप्पी बर्थडे, अगर आप कोई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 12 बज चुके हैं यहाँ पर, तो हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड ऑन अ साइड नोट अगेन सर, अभी आई जस्ट फाउंड आउट कि मेरी जॉब जाने वाली है अगले महीने से, तो अगर कोई भी आपको फ्लाइंग के रिगार्डिंग में कोई भी ऐसा शो करना हो वेयर आई एम एबल टू इम्पार्ट माय नॉलेज, आई एम अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड एयरलाइन कैप्टन, तो प्लीज गेट इन टच. आपको आप कभी एलए में होंगे या मैं कभी ओकलैंड फ्लाई करके आऊंगा या उस तरफ आऊंगा, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट इन कांटेक्ट विद यू सर. Absolutely, sir. We'll connect. And so sorry to hear that, but hopefully things will be good very soon. नहीं सर, दूसरी चीज कर लेंगे, उसमें क्या है, मैं भी वीडियो बना दूंगा. I like that approach. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Take care. All right. Okay, so here is the moment of truth, guys. आप लोग बड़ी देर से again, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, सेशन के शुरुआत में भी मैंने बोला था, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, और शुरुआत से इस बारे में मैं बात करता भी आया हूं कि जो ट्रोल करते हैं, आई थिंक वो हमें सबको, चाहे वो मुझे ट्रोल करते हैं, चाहे वो विभोर को ट्रोल करते हैं, सब हमारे को मोटिवेट ही करते हैं. बट एक कॉमन चीज मैं अभी भी देख रहा था यहाँ पर, हर कोई अभी भी ये सोच रहा है कि यहाँ पर जो हो रहा है is a little fake. So what I did was, and this will prove a couple of points to a couple of you, कि you know विभोर जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं कि विभोर नहीं है तो ये नहीं और वो नहीं, and why विभोर not here. You know, मैंने अभी उनको मैसेज किया and he was here just on the stream. Looks like you know he's having some network issue and Vibhor will be back. So जैसे ही वो आते हैं, आप सबके जो questions हैं, आप डायरेक्टली उनसे ही क्लैरिफाई आप कर सकते हैं. So let me do that actually, and here we go. Hello विभोर भाई, क्या हाल चाल? Hello Varun, good to see you again. Good to see you, of course, and I am sure जो आपके इतने प्यार और आपको सपोर्ट देने वाले जिनको आजकल मुझे ट्रोल करने में ज्यादा मजा आता है, वो सब आपको देख के बहुत खुश होंगे इस टाइम कि पता नहीं क्या हो गया. और उससे ज्यादा हम दोनों को देख के खुश होंगे इकट्ठे कि देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन अस. एब्सोल्युटली. अब तो प्रूव हो गया. आई डोंट नो कैसे सबको प्रूव करें. यू नो अगेन आई थिंक विभोर ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार बोल चुका है. आई थिंक अपने लाइव में भी विभोर बोल चुका है, अदरवाइज भी बोल चुका है, ट्विटर पे भी बोल चुका है. यू नो सारे लोग, चाहे वो एक वरुण हो, चाहे वो उज्जवल हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने बोला है कि हमारा जो मिशन है वो सेम है. हमारे जो कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव एक है. वी विल कंटिन्यू टू डू दैट, विच इज एक तो ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना. ऑफ कोर्स उसके साथ ये जो गटर क्लीन अप एक्टिविटी इन्होंने शुरू किया, ही विल कंटिन्यू टू डू दैट फाइट, ही विल नॉट स्टॉप, एंड वी ऑल हैव टू सपोर्ट ईच वन ऑफ अस. चाहे वो उज्जवल हो, चाहे वो इश्किरण हो, चाहे वो कोई भी और हो, हर एक का प्लेटफॉर्म है. हम लोग जुड़ने के लिए आए हैं, हम लोग टूटने के लिए या तोड़ने के लिए नहीं आए. सो यू नो विभोर, टेक दिस, यू नो व्हाटएवर 2-5 मिनट्स जो भी आपने कहना चाहते हैं, एक बार लेट्स जस्ट क्लियर दिस मिथ. आई नो आपने सुबह एक सेशन रखा है. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कमिट राइट नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली एक सुबह एक और इवेंट है जिसको मुझे करना है. बट अगर मुझे मौका मिला, मैं भी वहां आऊंगा और वहां बात यही करेंगे. बट व्हाई डोंट यू टेक दिस मोमेंट एंड प्लीज टॉक टू दीज गाइज जो really who have been kind of saying things on your platform and my platform as well. Okay, so guys, पहली बात, thank you so much. यार ये हटा यार, you know it, I hate it. Okay, चले. Okay, so guys, पहली बात, thank you so much for all the love, support and blessings for both of us. हम दोनों को बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, and it is only because of that love that we are हमारा इतने हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद we have a very strong bond कि आज भी कुछ होता है तो हम एक दूसरे को कॉल करते हैं, सब कुछ करते हैं, डिस्कस करते हैं. हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते क्योंकि उसकी बहुत सारे रीजंस है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरे पास बैकिंग है, लेकिन एज वरुण ने कहा, मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले कि it is not possible for me to secure everyone.
and you need to understand this fact. He is sitting in a foreign country. कई लोगों ने पूछा है that why वरुण वरुण को क्यों चूज किया गया? मैंने चूज किसी को नहीं किया, मुझे किसी ने चूज नहीं किया. इट इज ऑल डेस्टिनी. शायद सुशांत ने हमें चूज किया. As I said, there is a divine power behind us. Honestly speaking, मेरा इस केस में आना का कोई प्लान नहीं था. मैं अपना आराम से शिमला में बैठा हुआ था, एक फोन कॉल आता है और मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ. मैं दिल्ली आता हूँ, उसके बाद लवली मुझे कांटेक्ट करती है और and we get connected to Varun and me get connected to each other. तो कहाँ से हुआ, किसने किसको चूज किया, you never know. And जब वरुण और मैंने बताया भी था एक शो पे कि जब मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो गया था, जब वरुण ड्यू टू पावर आउटरीच वरुण मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाया था एक दिन. Yep. You remember Varun? Yes, तो absolutely. लेकिन डेस्टिनी थी. मैंने ये सोचा था कि यार इतना एरोगेंट बंदा, मैं उसका वेट करूं, मैसेज भी नहीं कर रहा. So लेकिन डेस्टिनी थी that we came together and we did continuous shows together. We connected with millions of people. We connected with thousands of volunteers. और आज एक टीम बनाई है वरुण ने. We all should support it. I would support it completely. Don't worry. आज नहीं तो कल वरुण और विभोर वापस जरूर आएंगे. देर आएंगे दुरुस्त आएंगे. नहीं, लेट मी अश्योर यू वन थिंग, हमारे में कोई रिफ्ट नहीं है. और ये इस बात से साबित हो जाता है कि मैं आप लोगों के सामने वरुण की शो पे बैठा हूँ. और अभी मैंने मैसेज किया, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, ऐसा नहीं है कि कि मैंने प्लान करके 12:33 में मैसेज किया, 12:35 में मैं आ रहा हूँ. या सो प्लीज आप लोग समझे, यहाँ कोई रिफ्ट नहीं है, कभी रिफ्ट नहीं होगी. बट एट द सेम टाइम आई विल कंटिन्यू माई फाइट दिस वे, ही विल कंटिन्यू हिज फाइट दैट वे. हम लोग पैरेलल चलते रहेंगे. मे बी वी वोंट सी ईच अदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, मे बी नॉट, बट एट द सेम टाइम जो कॉज है उसको समझो. प्लीज डोंट मेक इट अबाउट विभोर, प्लीज डोंट मेक इट अबाउट वरुण, प्लीज डोंट मेक इट अबाउट सम इंडिविजुअल. हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है. जैसे अभी हमारे पिछले जो कॉलर या लिसनर थे, उन्होंने भी बोला कि हम मल्टीपल वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि हमारा वो नहीं है पर्पस. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, not here to make videos, get views, get like. हम अपनी तरह से करेंगे. We have taken up a bigger initiative and we want everybody's support. चाहे वो विभोर हो, चाहे वो उज्जवल जी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका हमें सपोर्ट चाहिए. because we are going to bring up other topics as well. yes, अभी हमारा फोकस ये सुशांत सिंह राजपूत का जरूर रहेगा, उस पर हम फाइट करते रहेंगे. but at the same time we are going to take up bigger things also. तो और चीजों में हमें सपोर्ट करें. और ये ब्रेक जो हमारी कंट्री का एक फेमस है, राइट, डिवाइड एंड रूल, वो छोड़ दें, उस चीज को खत्म कर दें. ये डिवाइड एंड रूल जिन्होंने करना था वो चले गए, अब उनको आप मत बने उनका एक पार्ट. सो लेट्स जस्ट वर्क टुगेदर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी अपनी जगह पे. अगर मैं नहीं कर सकता तो देयर आर रीजंस, वो नहीं कर सकते उनके भी रीजंस है. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट्स द ओनली थिंग वी वांट टू क्लैरिफाई. इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते. अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी, अब इसके बाद आई डोंट थिंक विभोर के पास भी कोई आंसर होगा फिर. यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट द फाइट वी आर फाइटिंग. रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है. या बहुत सही कहा. एंड एक मैं यहाँ पर जरूर बिफोर आई ऑफ कोर्स लेट हिम गो, एक हमारे बहुत ही प्यारे हैं डेव पाजी, उन्होंने एक मुझे कोट दिया था और जो मैं अब कोट करना चाहूंगा. डेव, जस्ट बिकॉज यू सेड दिस, he mentioned, don't be fixated on the name, stay focused on the aim. ये बहुत सही चीज उन्होंने कही है. एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं सबके लिए. Don't be fixated on the. Please forget Varun Kapur. Please forget Vibhor Anand. Please forget anybody else who's doing it. We all are SSR warriors. Please stick to that name. बस इसके बाद I don't think I have to do any. जैसे कि मैंने वरुण पहले भी कहा है कि आज मैं हूं, कल मैं नहीं हूंगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइट खत्म हो जाएगी. फाइट रहेगी. मेरे everyone is replaceable in this world.
हर किसी का रिप्लेसमेंट है। Yep. ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेरे बिना काम नहीं होगा या उज्जवल के बिना काम नहीं होगा या किसी और के बिना काम नहीं होगा या फिर वरुण के बिना काम नहीं होगा। काम सारे चलते हैं, बट उसके काम करने के तरीके बदल जाते हैं। That's it. And like I said, right, I mean, I still have to give all the credit to him as well कि अगर ये विभोर ना जुड़ते तो ये शायद प्लेटफॉर्म का ये स्ट्रक्चर ना खड़ा होता, जो हम करने की अब कोशिश कर रहे हैं वो शायद ना हो पाता. So I have to give him the credit as well. But at the same time, what I said, you know, हमारे अब रास्ते शायद अलग हों, but हमारी मंजिल एक है, and let's focus on that. So I would give these last few people who are here an opportunity, जो भी आप कहना चाहते हैं, because I've been talking for the last again 3 hours. One more time, please go ahead, and Vibhor bhi hai. If you have questions for him, please target it, and let's close this session after this. Hi Vibhor. Hi sir. Hello. Hello. Vibhor sir, first of all, thank you so much. आपने काफी सारे सोए हुए लोगों की आंखें खोल दी. And I think कभी कभी नींद से जगाने के लिए झटके की बहुत जरूरत होती है. वो झटका आपने बराबर दिया सब लोग को. एंड मेरा एक क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली सर सजेशन था कि हम लोग ना, अगर आप एक हमको पढ़ा रहे थे तो हम लोग पेज 5 ही डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे. मतलब हम लोग पहले की इंफॉर्मेशन ही एसिमुलेट कर रहे थे, उतने में आपने आगे इतने सारे और बड़े खुलासे कर दिए. इसकी वजह से भी काफी लोग आई थिंक हिल गए होंगे कि अरे ये क्या हो गया यार, इतना सारा इंफॉर्मेशन जब ओवरलोड हो गया. तो आई थिंक सर आप भी थोड़ा सा एक थोड़ा सा लेयर छोटा छोटा करके अगर आप हमको बताएंगे तो हमको ज्यादा इजी पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने में. बिकॉज कभी कभी तो सर सच में दिमाग खनक जाता है कि प्रॉब्लम ये है कि इतनी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं धीरे धीरे भी बताऊंगा ना तो कई साल लग जाएंगे. ये बात भी सही है सर. एंड तो थोड़ा पेस भी हमें रखनी पड़ेगी. और हम लोग इतने मैच्योर हैं कि हम एनालाइज कर सकते हैं. जब हम अपने काम में इतने मैच्योरिटी दिखा सकते हैं तो अपने देश के मामलों में क्यों नहीं दिखा सकते. ये बस सही है बात. बस सर इतना ही था. थैंक यू सो मच. एंड एक लास्ट क्वेश्चन. अभी मैं देख रहा था कि जो रिसेंटली जो दिशा सालियन वाले केस में इतने सब डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड वो पॉलिटिशियन भी आके लोग बोल रहे हैं. सो सर व्हाट डू यू थिंक कि अभी ये सब आने के बाद क्या मेन कल्प्रिट्स लोग कुछ पीछे की डील काट के निकल लेंगे कि दे विल बी एबल टू कीप देम अकाउंटेबल. किसी को ना निकलने देंगे हम लोग. डोंट वरी. ठीक है सर. थैंक यू सो मच. बस इतना ही क्वेश्चन था सर. थैंक यू. Okay, thank you. All right, so Sonish, please go ahead. Yeah. Hi Vibhor. Hi Varun. I mean, I have immense respect for you guys. I cannot tell because I am just a common man. Okay. I mean, and seeing you people do this is wonderful. This is a revolution. I'm telling you. Okay, Varun, it's wonderful the way you have been supporting things. Vibhor, you are a hero, man. This is the kind of hero that India deserves. Okay, and India has never got it. It's like Batman coming into the picture. You are great, Vibhor. You're great, and all the credit to you people. And I do not have any particular question. I joined in when I saw Vibhor came in, and this is wonderful to see both of you together again. All those things that people have been saying, that's just that just can be ignored. And as you people said, the purpose is one, the paths may be many, the destination is just one, and this is wonderful. I mean, I'm actually, this is, and your efforts have been so wonderful. I mean, this Vibhor, you are great. I mean, how the courage that you have, the guts that you have, you are giving power to the common man as well. I mean, and this is a huge opportunity because I started seeing you people maybe 5 to 4 days ago, and now I'm a huge fan of yours. Okay, and I haven't built a trust with somebody on who I have never known, who I've never seen. Okay, so it's very hard for anyone to build a trust on somebody like that. But then I'm telling you, both of you have my trust and my support. It's not just mine; it's a nation's support. Okay, and here it's like the battle of Mahabharata. You know, the side on whose God is wins, and God is on your side. I'm telling you, for the work that you have been doing, God is on your side, and you'll definitely win. We all are with you. Hats off to you. You have all my respect, all my honor, and all my prayers and wishes. Both of you, Varun and Vibhor, this is incredible. We love you. All the whole India loves you now. Okay.
Just stay safe. Thank you. And just do what you are doing. This is wonderful. I love you people. I love you. Thank you very much. All right, so we'll quickly wrap it up. Yes, Jatinder Paji, let's go. My man from Ludhiana. Yeah, hi Varun, hi Vibhor. Yes, I'm glad you remember me. Okay, so this is my second time, and first of all, I would like to say that it's great watching your show, and it's great that Vibhor is also here because I had some questions from him. So, like after watching the last live with the doctor from US, I could very well predict that thoda panga hoga because of the topic of Joe Biden and adrenochrome. But it is quite surprising that the doctor did not know about adrenochrome because there was a Pizzagate scandal which happened many years back in the USA, and it was all on prime time. So it is quite surprising. Anyway, coming to Vibhor, actually, I don't want to be devil's advocate here, but somebody got to do it. So I had some a bit tough questions because I'm following Vibhor and I really admire his courage. Jatinder Paji, questions nahi. If you have any comments for him or me, we'll take comments. Question rando yaar aaj. No question. Today question no questions. Okay, but okay. Vibhor is also I think joining. Though, but don't. Yeah, let's not get into questions. Okay, not two questions. Okay, then it's fine. Actually, Vibhor also has a show today. I think he's going to go live 7:30 in the evening. 7:30. Yes. Okay, that's great. So yes, that's where you ask the questions. Yes, I'll definitely ask the question there. So I would say that I would just say that keep it going, and it's great to have you both together because you both make a very good team, and the combination is very good. So please continue this. Yep. Oh, thank you, Paji. All right. Thank you. Thank you, Dee. And thank you so much so I'm gonna... for having me on. I'm sorry. Okay, I am a big fan. I have to say, it's 3 a.m. आप लोग सुन सकते हो ना मुझे? Yes, Karan. Okay, so यहाँ पर मैं हूँ. It's 3 a.m. मैं 3 घंटे से इंतजार कर रही हूँ just to speak with you, and I had no idea कि आप आओगे. Oh man. And honestly, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे घर में आपका शो इतना चलता है कि एक लाइव स्ट्रीम दिन में 3, 4, 5 बारी वो आपकी फैमिली देखती रहती है. And I do have to say a few things, if you don't mind. सबसे बड़ी बात, मेरे पापा बहुत jealous होंगे आज when I tell him कि that I've been on here. But मेरा सबसे बड़ी बात ये है कि for the last live stream, a lot of people are going to have a lot of different opinions, but how you portray those opinions is what counts. जैसे होता है ना कि माँ बाप से जब लड़ाई होती है तो तुम्हारा वो होना चाहिए कि एक टोन ऑफ होना चाहिए. अगर तुम माँ बाप को एक certain टोन में बोलोगे तो सीधा चप्पल लगेगी मुंह पे. That's the kind of thing. So that was what I think the audience were a little bit off by. But other than that, it's good to question a lot of these things. So adrenochrome and child sex trafficking and all of that stuff has been very well known here, but it's a conspiracy theory here. मैं मिलेनियल हूँ, मैं इन चीज़ों को बहुत फॉलो करती हूँ. मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हिलरी क्लिंटन, Biden, all of those people, they are named with certain things, but everything is a conspiracy theory, and हर conspiracy theory पे question होना चाहिए. But I believe कि a conspiracy theory that has not been publicly discredited is not, it's not a lie, but it's not the truth. So just because ये ऐसा लगता है कि है या नहीं है, उसके ऊपर question करना चाहिए लोगों को. और दूसरी बात ये है कि मैं comments पढ़ती हूँ a lot of the times, and I've seen a lot of Indian people from India say कि nepotism तो normal है, this is normal, this is fine, everything like that. मैं यहाँ पर although मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, but I came here when I was very young, so I grew up here. So मेरी थोड़ी सी mentality different है. We do have nepotism here, but I think कि इंडिया में जो nepotism है वो अब एक नया caste system की तरह बन रहा है. कि like lawyer का बेटा lawyer होएगा, doctor का बेटा doctor होएगा, professor का बेटा professor होएगा. We don't need that stuff. We need movement amongst classes.
That's why यहाँ पर देखो तो janitor को उसी दर्जे से जाना जाता है as a teacher, a professor, or like a doctor. But we don't need that in India, and it's hard for people to understand that कि हाँ nepotism exists karega, but you need to stop blocking paths for your kids as well as other kids to go into more different diverse fields. दूसरी बात ये है कि one thing that I noticed was कि लोग कह रहे थे कि ये mental health patient है, so of course depression है, so of course suicide karega या whatever. I am a psychology student. I'm not a psychiatrist. I'm not a psychologist. I'm a psychology student. But so this is very passionate, thing for me. But I have to say that everybody who is, going through a mental crisis deserves not only the help, but deserves the dignity of an investigation that is proper and concise. ये नहीं होना चाहिए कि डिप्रेस्ड है तो गिर जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं. It's not that. कल किसी के बैक में छुरा लगा होगा तो you're gonna say कि वो डिप्रेस्ड था, इसने अपने आप ऐसे बैक में छुरा डाल दिया. That's not how things work. Right. So other than that, I think a lot of us have grown up seeing Bollywood for what it is. I haven't watched a Bollywood movie, thank goodness, for 5 years. The last one that I watched was Hindi medium, and I've noticed a trend कि जो भी movies बहुत low rating में आती थी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती थी. So I really try to limit my Bollywood intake, but I have to tell people who are watching this, instead of spending like 10,000, 5,000 rupees on, going to cinema, invest like 500, rupees in Netflix. You have the world in your hands. You're not putting in money in their pockets directly. But other than that, I honestly am such a big fan, and I hope you guys continue the good fight. And thank you so much for being our voices. Thank you so much. Thank you. Karen, Thank you. thank you for making keeping up for what 2 hours, 3 hours in the queue. So thank you so much. It's okay. I have homework to do tomorrow, but I'll get through it. All right. Thank you so much. Thank you. All right, Rajni ji, you're the last one. Please go ahead. You are mute. You are mute. Hello, आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, yes. So good to see both of you together. I don't have any questions. I mostly don't have questions, but I'm here to cheer you guys up and give 3 reasons to stay in the fight with all the courage. One reason, you two are very genuine. You connect with human. You both have a gift of connection. So let me tell you why. You both have a gift of connection in certain way. Varun, you bring a very genuineness to everything you pick up. You come up with a very hey, I'm going to pull it through as long as I can. You give a very realistic approach to it, yet you work harder than most of us. Hence, do not get swayed, ये वो देश है जहाँ पे सीता को भी हमने नहीं छोड़ा है, उसके बाद हम उसकी पूजा करने लगते हैं. तो आप अपने लिए कोई भी किसी भी कमेंट को दिल से न लगाइए. We have 1,000-year ka muck to clean. It's not 2 Salman Khans or 5 Shah Rukh Khans or 3 Dawood Ibrahim coming. They're all Indian kids at the end of it. System से बने हैं वो. अगर system को deep तक जाके clean नहीं करेंगे तो कोई और आ जाएंगे. So I feel it's a bigger fight. बेचारे सुशांत का sacrifice हो गया and हम सब connect हो गए. It's almost like कड़ियाँ जुड़नी चाहिए तो कुछ ना कुछ होगा. That's one thing. And second thing, I feel, Varun, instead of sacrificing you to combined, you to have a collective energy which is not 11, which is almost like 11,000 volt. So don't just give it up on the table because some people are asking some random question. That will be a huge loss for the collective movement. Varun, you want to pick up even beyond SSR justice or beyond Disha. Imagine, हमने सोचा भी नहीं था कि Disha और Nirbhay eventually get equated. How bad it is. I feel like बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी को भी उसके वर्क प्लेस में उसके कोलीग्स के साथ ये सब होना ही नहीं चाहिए, और उसको हम दबा रहे, पूरा सिस्टम दबा रहे. Just think of it. It's not just SSR, it's not just Disha. It's about being able to relate to your roots and say, hey, I was born in India. मैं कहीं भी जाऊं, I will always be proud of being an Indian. So with that in mind, I feel like maybe I'm a brand strategist for a lot of big brands. I want to suggest you guys a few things. Maybe you need to strategize the diplomacy around what to be spoken where. Maybe Varun can have
We can have a very limited, very politically correct statement. At the same time, in a moderation, and still keep the momentum going. That's for the international crowd. For Indian crowd, where Vibhor may have more leeway, maybe there is more unfiltered version. So I feel like we should try a few things before giving up this whole. आप past tense में बात कर रहे हो, past tense में मत बात करो. Yeah. Let's connect offline, Rajni ji. I think if we can do something, more than happy to be part of it. At this point of time, जैसे हमने कहा, right? I mean, it's a global justice जिसकी हमने शुरू की है. So we will continue, but I'm more than happy to hear this out, and let's see if we can put some filters on Vibhor. जो हमेशा unfiltered ही आते हैं और unfiltered ही रहने चाहिए is what my take is. Because अगर उस पे filter आ गया, then I think there is something that might get lost somewhere. So Vibhor, I think, is one guy who should continue his fight the way he wants. उसी से I think लोग डर रहे हैं. At the same time, from my perspective, you know, and people like me, सिर्फ मैं अपना नाम नहीं लेना चाहूंगा, और भी मेरे जैसे वरुण होंगे जो इस फाइट में ज्वाइन करना चाहते हैं, but I think they will have that risk factor जहां पर भी हैं. तो I think, you know, it's always good to have another version. More than happy to hear that out. Let's see if we can work on something and create something big, because I also see that connect. You know, I also understand the connect. You have that, and I feel so disappointed that just because it's almost like evil forces are winning again. Maybe would you 100 or 10,000 odd questions maybe those were the placed people trying to pull you guys in, and they're winning it again. So I feel like, and I'll tell you why the diplomacy is required. I mean, I sometimes run these political campaigns for senator running and then brands going after lobbying. And I feel like it's not, you don't need to change the message. You just need to pick very diluted words. And we're all educated people. India में इतने engineers और इतने doctors बनते हैं कि सबको dots, like he was already saying indirectly, connect the dots, follow the narrative. So there are ways of doing it. It's not, आप लोग को completely give up मत करो. And Vibhor जी, आपके लिए third point है मेरा, आप किसी से validation मत मांगिए. सत्य को किसी की जरूरत नहीं होती है. फायर जब लग जाती है तो फायर अपने आप हीट देती है. Same way, you are that spark. And we need millions of such spark in India. If you ask me, every nukkad, every gaon, every शहर needs it. Because of that, कुछ लोगों ने पूरे country की लगा रखी है. इतनी लगा रखी है कि हम 75 साल की आजादी के बाद भी हमारे पास 12 मेट्रो से 300 मेट्रो तक नहीं हुए हैं. You go beyond 10 metro cities, India is still the same of 1930s India. So we need more of it. You don't need, fire does not need validation from small candles to say, hey, am I right? You are who you are, be who you are, stride on. Right people will be after you, wrong people will throw stones at you. Guess what? You just, हाथी की तरह आप आगे जाते जाओ, जहां तक जा पाओगे जाओ, and right people will eventually come. Cool. So that's all these 3 points. That's a great point. Thank you so much. We all need you. हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हर एक बच्चे को, हर एक आदमी की जरूरत है. हम सब वॉइसेस की जरूरत है. आज हम आजाद हैं क्योंकि हमसे पहले कुछ लोग खड़े हुए, कोई लाठी लेके खड़ा हुआ, किसी ने अपना घर जलवा दिया, इसीलिए हम आजाद हैं. तो आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती है. सेम वे अभी हम मांग रहे हैं कि हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए, सॉरी, yeah, so I think I'll cut short, but yes, stay on the fight the fight. We all get energy from you guys, and I will pray for both of you to find a way. And Varun, I'm happy to connect and find a diplomatically right way of pursuing this. Sure, absolutely. Thank you once again. Thank you so much. All right, last के अब 2 minutes. It's 12:28. आपके एक बज चुके हैं. So Vibhor, last parting words before we end this session. Well, don't worry, guys. At the end of the day, we all are one. The cause is same. The fight is same. The goal is same. So stay strong, stay united, and do watch me live tonight at 7:30 p.m. IST on my channel. Sorry, थोड़ी promotion कर रहा हूँ. करो. इतना तक बनता है. बिल्कुल. So yeah, उस channel का नाम भी बता दो. हम तो पूछेंगे ही. I'll share the link on my Twitter. And Varun, you need to be on that show tonight. Make sure that you come. Yeah, like I said, right, वो जो दूसरा event है उसके साथ I'll try to kind of do something.
एक बार हर जगह क्लैरिफाई हो जाए once and for all. I really want all the people to just understand there is nothing wrong. सिर्फ हमारी अब डायरेक्शन नहीं बदली है, हमारी डायरेक्शन वही है, बट हाँ हमारे जो पाथ हैं, मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ तो ये राइट से जा रहे हैं, बट आगे जाके जहाँ मिलेंगे वहां पर ये जितना गटर जो है सारा साफ करके in the end I would like to say one simple thing, यार हर किसी के पास विभोर जैसी बैकिंग नहीं होती. Absolutely. You understand, people need to understand कि मैं पिछले 1.5 महीने से जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास बैकिंग. अब किसकी बैकिंग है वो छोड़ दो. True. And that's a big statement to make, guys. So I hope you all understand this comment. This is a very big comment coming from Vibhor Anand. Ke, you know, he has backing, but he cannot guarantee that backing for me, my family, everybody, because we are not just, you know, individuals. There are so many people who are working behind the scenes. सबको नहीं safeguard किया जा सकता. So that is the only reason. So let's please make sure we put this to rest now tonight. 3 घंटे पूरे हो चुके हैं इस सेशन को, तो अब मैं आप सबको एक बार फिर से थैंक यू जरूर कहना चाहूंगा. The whole purpose of this session was to clear this air. Hopefully हम कर चुके हैं, but bigger than that, I'll now kind of tell you last 1 minute में कि do join us tomorrow. कल 2 सेशंस हैं. सुबह होगा हमारा महामृत्युंजय मंत्र, जो हम उसको एक थोड़ा छोटे लेवल पे कर रहे हैं, because tomorrow is a very auspicious day. Tomorrow, when I say tomorrow, my tomorrow, which is your, you know, जो इंडिया में बैठे उनकी रात. So एक वो सेशन है, और उसके बाद the bigger one for me is gonna be with someone who has taken up a huge case, which will make a lot of you, you know, shocked, as well as somebody who has taken this case and trying to get justice for the dead. उसके बारे में मैं obviously I'm gonna release something in the morning. अभी नहीं मैं करूँगा, but मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, very very high profile person जिनकी डेथ हुई थी, और उनके बारे में बात करने के लिए we'll have someone who will come up with certain facts, not fiction but facts and details, and we'll talk about it at tomorrow in my night, your morning. So I will keep you all posted. कल मिलते हैं, and thank you so much Vibhor एक बार फिर से आके ये clarify करने के लिए. I really appreciate that, and I will hopefully see you soon, and I'll connect with the other lady offline, and we'll try to get something done. Rajni ji. All right. Thank you so much, everyone. Take care. Good night, and I will see you soon.